multiple hats, former footballer, analyst, journalist, commentator. I don't know how many hats he actually wears. S. Sri Kumar. Sri, good evening. Bengal is going to take the field versus Karnataka. Has it already set your pulses racing? Well, Sanjeev, always the favourites in a football match, Bengal, but services can't be just written off like that. A very, very fit team, a very, very exciting match in prospect. Absolutely, very, very exciting match in prospect. And the important thing is that Bengal versus Bengal, traditionally powerhouse of Indian football. They won this competition twice in the national games. Runners-up also. Services have never made it to the semi-final. How do you think Services is going to be approaching this game? Well, they have got players from all over the country, all various units of their defence establishments, and it's difficult to put them together. But nevertheless, the coach has done a marvellous job in putting a fighting team over here. And certainly they're going to give Bengal a very, very good fight, at least. They're going to give Bengal a very, very good fight. But don't forget that Bengal is a two-time champion. And Bengal is also coached by the legend himself, Biswajit Bhattacharya. What do you think Biswajit is going to bring to the table tonight? Striking power. He was himself a striker, scored lovely goals for his clubs and for the Indian team as well. So obviously he's going to put up a very good attack on the ground. Absolutely, and the important fact is that one has to realize it's not just Biswajit Bhattacharya. Services are looking to make the final for the first time, and if Services do that, that'll be a huge deal. You've seen Services in the last game. How do you think they are progressing? Well, they did well to enter the semi-final. They certainly did very, very well to make sure that they were in the last four. And I don't think they're going to go down without a fight. They're not going to go down without a fight. And Sri, I'll let you off because I know, Sri, you have commentary duties. But I must tell you that this is one game which we are expecting to start off any time now. And Sri, we will be joined very quickly by three very special guests. I will invite you, Sri. You can get back to the commentary box. And we welcome, of course, you will see them on your screens, the gentleman Anandeshwar Pandey, the treasurer of IOA. Mr. Pandey, please come to my left. And of course, we are also joined by Viraj Sagar Das, who is the president of the Uttar Pradesh Olympic Association. I'll hand him over the mic. And of course, Mr. Abhijit Sarkar, the senior vice president of the Uttar Pradesh Olympic Association. Just about a few minutes to go. First and foremost, Mr. Pandey, IOA, what's at stake on the 36th National Games? How's it going so far? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 7 साल के बाद जो हमारी नेशनल गेम हो रही है, ये इंडियन स्पोर्ट्स को एक नया बूस्ट देगी। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था, खेलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया, उसको एक सपार करने के लिए हमें एक नई खेल संस्कृति की आवश्यकता थी जो हिंदुस्तान में नहीं थी। और ये निश्चित ही ये राष्ट्रीय खेल इतने कम समय में गुजरात ने 3 महीने के अंदर कराया, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। मतलब वही 3 थे। तो एक गुजरात ने ये सिद्ध कर दिया, दूसरे स्टेट के लिए एक एग्जाम्पल शो कर दिया, हाँ कर दिया कि आप भी कर सकते हो, करना चाहो तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। Brilliant. Mr. Pandey setting the tone. अगर करना चाहते हो तो जरूर कर सकते हो। Viraj, Uttar Pradesh has been rocking. I can see Viraj along with Abhijit Sarkar. They're both from the Uttar Pradesh Olympic Association. Viraj, how happy are you with your state's performance so far in the national games? नहीं, हम बहुत खुश हैं। इस बार उत्तर प्रदेश ने एक ऐतिहासिक परफॉर्मेंस दी है। इस बार हम 5वें स्थान पे आ रहे हैं लगभग इस वक्त, और हमारी उम्मीद है इससे बेटर हम और कर पाएंगे बाय द एंड ऑफ इट। और हमने इस बार पहली बार साइकिलिंग में भी मेडल जीते हैं। तो उत्तर प्रदेश लगातार नए स्पोर्ट्स में, जहाँ पे पहले उत्तर प्रदेश कभी नहीं था, उसमें भी मेडल जीत रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ऐतिहासिक बात है। और हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी का बहुत योगदान है। उनने आने से पहले भी टीम को बहुत उत्साह दिया, टीम के लिए एक मीट करी, किट दी बच्चों को, तो बहुत खुशी है। और इससे एक उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को बहुत मनोबल बढ़ रहा है। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है उत्तर प्रदेश हमारा भारत में सबसे नंबर 1 पे रहेगा, सर्विसेज के भी ऊपर। Absolutely, and you can see young blood there in administration, and we have Mr. Pandey. Viraj, one last word, Abhijit, I'm not going to ask you about the national games because this man, you've seen him in cricket, and of course he's with the Olympic sport also. Abhijit, today Bengal is taking the field. You can see right in front of you, the entire Bengal team is there, coached by the legend Biswajit Bhattacharya. Bengal versus Services. What are you expecting from the football game tonight? Biswajit Bhattacharya from Mohan Bagan, East Bengal, I still remember. Lekin the Services team is equally very strong team. So we are expecting a very strong fight. But one final word, kudos to the young leadership of Viraj Sagar Das and Anandeshwar Pandey. The way they have
put up a grand show in the national games this time for Uttar Pradesh, and kudos to our Prime Minister as well as our Chief Minister, Mr. Yogi ji. Right, so we are literally out of time because the players are now waiting to get out here. We have maybe a little bit of time, Mr. Pandey. जैसे इतने बड़े-बड़े events हो रहे, and we need to say a big thank you to all the organizers, the government, the respective government, the sports federations, everybody, because this has been a fabulous tournament. Thank you so much for organizing this and taking sport to every household. Ghar ghar mein, everybody is watching the 36th national games. I'll sign off with Mr. Pandey, Raj and Abhijit Sarkar. We'll be back sometime later. We'll have the match starting now because it's Bengal versus Services. Take it away back to the commentary box where I know there are two gentlemen who are ready, sitting, awaiting the start. Take it away. Let's have a cracker of a contest today. धन्यवाद संजीव। और 36वें इस राष्ट्रीय खेल में मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यहां पर वेस्ट बंगाल और सर्विसेज के बीच में आज पुरुष विभाग का ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाने वाला है वेस्ट बंगाल और सर्विसेज के बीच में। जैसे कि पहला सेमीफाइनल आज खेला गया केरला और कर्नाटक के बीच में, वहां पर केरला की टीम ने 2-0 की बढ़त प्राप्त करते हुए मुकाबला जीता, यानी फाइनल में जगह बना ली है केरला की टीम ने। और सर्विसेज और वेस्ट बंगाल की टीम से जो जीतेगा वो खेलेगा फाइनल में केरला के खिलाफ। टीमें मैदान में आती हुई ब्लू जर्सी में यहाँ पर वेस्ट बंगाल की टीम, और रेड स्काई ब्लू में जो टीम है वो है सर्विसेज की टीम। सारी टीमें लाइन अप करती हुई यहाँ पर ब्लू कलर में वेस्ट बंगाल की टीम जो कि बाईं तरफ यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, और दाहिनी तरफ जो टीम है वो है सर्विसेज की टीम। और वेस्ट बंगाल और सर्विसेज की टीम के बीच में ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला थोड़ी देर में यहाँ पर शुरू होगा। जो बीच में काले वस्त्र में नजर आ रहे हैं, काले कपड़ों में दिख रहे हैं, वो विलियम्स जॉय कोजी जो कि मेन रेफरी हैं, साथ में क्रिस्टोफर पीटर, मनोज कुमार साहू असिस्टेंट रेफरी, और फोर्थ ऑफिशियल आशीष तिवारी। तो ये मुकाबला बहुत संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा। जो गेस्ट हैं सभी से हस्तांदोलन करते हुए अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हुए एका एरिना ट्रांस स्टेडिया अहमदाबाद में ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला पुरुष विभाग के अंतर्गत थोड़ी देर में यहाँ पर शुरू होगा। वेस्ट बंगाल और सर्विसेज के बीच में केरला के खिलाफ कौन सी टीम यहाँ पर खेलेगी उसका निर्धारण 90 मिनट के बाद यहाँ पर हो जाएगा। मेरे साथ मेरे साथी कमेंटेटर यहाँ पर एस श्री कुमार, आपका स्वागत है, और अपने ओपिनियन, अपने विचार आप रखें कि किस तरह से मुकाबला होगा, कौन सी टीम यहाँ पर जीतने जा रही है। Thank you, Mahesh. Certainly a very keen contest in the offing. Bengal taking on Services in the second semi-final. Kerala having entered the final already, defeating Karnataka by 2 goals to 0 earlier in the evening over here at the Trans Stadia in Ahmedabad, Gujarat. And Bengal certainly have the edge. Winners of the Group B, where Services were runners-up in Group A. So West Bengal winners in 94 and 2011, runners-up in 1985 and 2003. They also have a very good lineup, a strong midfield backed up by 2 good strikers in Ravi Handa and Narohari Shrestha, a confident defense, and also Raja Barman, the goalkeeper, not being tested much here. As you see on your screen, the players in their customary handshake with the officials and the opponent team. There you see Bengal in the all blue attire and Services in their red and white attire to the right of your screen as they take their positions as the 4 officials for the match, for the toss with the 2 captains of the teams. And it's going to be a very keen tussle, no doubt about it. The referee, Williams Joy Koshi, assisted on the lines by Claudius Peter and Manoj Kumar Sahu, with the 4th official being Ashish Tiwari. There you see the captains posing for a photograph with the 4 officials here. And very keen and close encounter in the offing. Services, a very fit team. Bengal, a little more skillful, but that may not possibly count if they're not able to translate that skill into numerical terms. And Services certainly are going to put up a good fight here in this semi-final. Yes, Ashish. Mahesh, sir, beg your pardon. वेस्ट बंगाल की टीम जो सामने है आपके राजा बर्मन, विश्वजीत हेमब्रम, तारक हेमब्रम, रॉबी हंसदा, नारोहरी श्रेष्ठा, दीपक कुमार रजक, वासुदेव मंडी, आकाश मुखर्जी, अमित चक्रवर्ती, तोतन दास, सुरजीत हंसदा और राजा बर्मन जैसे कि गोलकीपर हैं।
तो और इनके कोच हैं विश्वजीत भट्टाचार्य, और लाल वस्त्र में इस समय जो जर्सी पहनी हुई खिलाड़ी हैं सर्विसेज की इस समय स्क्रीन पर। That's the lineup of the services team for you. Goalkeeper Bhavindra Malla Thakuri with Amal Das, Sunil B, Noven Gurang and Suresh Mitai in defense. Deepak Singh, Christopher Kamai, Pintu Mahata in midfield. Ronaldo Singh, Shreyas and Liton Sheel in the attack. Liton Sheel, being very impressive in the tournament so far, is back in the lineup, and let's see how much he can do to trouble the West Bengal defense over here. There you see it, services ready for the kickoff with the number 11, Shreyas Vijay. The referee, Williams Joy Koshi, on the screen over there in the center of the field. The Kerala team are sitting in the stands watching the outcome of the second semi-final to know whom they will have to lock horns with. Yes, Mahesh. मुकाबला शुरू हो गया यहाँ पर फ्री किक के बाद यहाँ पर, और निश्चित रूप से ये मुकाबला ये जो सर्विसेज और बंगाल के बीच में खेला जाएगा, इसमें ये डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम यहाँ पर केरला के खिलाफ खेलने जा रही है फाइनल में। बाएं छोर से आक्रमण की भूमिका बनाते हुए सर्विसेज खिलाड़ी आते ही अपने पहले मिनट में ही उन्होंने पेनाल्टी बॉक्स की तरफ अग्रसर किया था अपने कदमों को, लेकिन यहाँ पर थ्रो लाइन के बाहर थ्रो इन करते हुए वहाँ पर सर्विसेज के खिलाड़ी इस समय बिल्कुल सामने वाले छोर पर ये थ्रो इन होता हुआ सामने वाले छोर पर 4 नंबर की जर्सी दीपक सिंह के पास उन्होंने दिया बैक पास, वहाँ पर समांतर पास, और बिल्कुल वहाँ पर राइट फ्लैंक पे जो खिलाड़ी हैं आगे पीछे और उसके बाद सामने की तरफ फाड़ करते हुए उन्होंने गेंद को देना चाहा था पेनल्टी बॉक्स की तरफ। ऊंचे कद के खिलाड़ी ने पैर भी घुमाया हवा में, लेकिन क्रिस्टोफर पहुंच नहीं पाए। और अभी प्रारंभिक क्षण इस मुकाबले के दोनों ही टीमें बिल्कुल मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ यहाँ पर खेलने की कोशिश में लगी हुई हैं, और निश्चित रूप से उनकी नज़र होंगी केरला की टीम के ऊपर कि हमें उनके साथ फाइनल खेलना है। इस 36वें राष्ट्रीय खेल जो भी खेले जा रहे हैं एक एरेना ट्रांस स्टेडियम अहमदाबाद में, उसका सेमीफाइनल का ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला तिरछा पास वहाँ पर पहुँचता हुआ सर्विसेज के खिलाड़ी के पास, जो कि अमित चक्रवर्ती सामने की तरफ पास दिया उन्होंने, थोड़ा सा टसल, थोड़ा सा वहाँ पर दोनों खिलाड़ियों के बीच में टैकल करते हुए पोजीशन लेने की कोशिश में यहाँ पर इस समय सुनील भी, और दे दिया अपने सहयोगी खिलाड़ी के पास कि वो वहाँ पर वो किक ले, फ्री किक, देखना कि कहाँ जाकर रुकती है। 22 नंबर के सुरेश मेथी जो कि कप्तान है, बहुत जिम्मेदारी, बहुत सोच विचार करके प्रिया दर्शन जो कि कोच है उन्होंने समझा कर भेजा होगा। आज खिलाड़ियों को दोनों ही कोच अपने तरफ से निश्चित रूप से ये हिदायतें अपने खिलाड़ी को दी होगी कि आज उन्हें किस तरह की नीति को अपनाकर यहाँ पर खेलना है। प्रारंभिक क्षण है, अभी तक इतनी गर्मजोशी यहाँ पर नजर नहीं आ रही। दोनों खिलाड़ी, दोनों टीम के खिलाड़ी बिल्कुल सुरक्षात्मक ढंग से खेल रहे हैं। बीच डिफेंडर्स जो उनके हैं, बीच फील्डर्स हैं, उनके साथ वो खेल ज़्यादातर रुका हुआ। ये केरला के खिलाड़ी जो नज़दीकी नज़र रखे हैं, और बहुत ज़रूरी बात होती है कि कौन सा प्रतिद्वंदी आपके साथ खेलने आ रहा है फाइनल में, उनके खेल को देखने की ये जो रणनीति है मैं समझता हूँ बहुत अच्छी और चतुर चालाक नीति यहाँ पर केरला की टीम की। Certainly, Mahesh, the team after the match against Karnataka, which they won 2-0, watching the proceedings over here to know which of the two teams they will face in the final. What are the strong points? What are the weak points? The coach will assess the strengths of the opponents to plan their tactics as they battle for the gold medal here in this football competition. And more importantly, this match being played under floodlights here at the Trans Stadia. Certainly, the conditions very ideal for a game of football. And at the moment, it's a foul there by the Bengal defender on the far side over there. And the referee asking him to come over. And that's the number 14 there for you, Amal Das, being orally cautioned by the referee over there. And a free kick to the Bengal team from the far side. So let's see what they can do with this. The free kick cleared away, and the danger averted. Services on the attack there. A long lob on the far side, but played far too deep and long for anybody's comfort over there. It goes over the line for a throw into Bengal from deep inside their own territory on the left flank. The Bengal players trying to work up some moves over there.
Basudev Mandi intelligent enough to initiate moves as they did in the earlier matches of this tournament. Once again in the thick of action, so is Amit Chakravarti, the number 18, overlapping on the right and conjuring up openings for the strikers up front over there. But right now the ball in the services half with the services players. The number 17 there for services. Sunil B with that ball, but losing out there. In any case, the stopper comes to his rescue. That's Navin Gurung, puts the ball on the far side of the field, but Bengal still have possession. Tarak Hemram on the far side of the field over there. The ball going over the touchline on the far side for a throw-in to services from deep inside their own territory on the left flank. So at the moment, at the initial stages of this match, both teams seem to have an equal say in the proceedings as far as the midfield exchanges are concerned, neither being dominant at the top of the penalty box and not a single chance being conjured up by either of them in the first 5 minutes of this match. The second semi-final of the football competition of the 36 national games here on the floodlights at the Trans Stadia in Ahmedabad, Gujarat. Services on the attack this time with Liton Sheel with the ball there. Overlap on the far side there, and that comes a shot, a lovely shot over there from the overlapping right wing back Amal Das, but the ball just blazing over the crossbar, just over the crossbar. In fact, you see the replay of that effort, and the right footer just over the crossbar on the left, to the left of the goalkeeper Raja Barman, who watches it sail away harmlessly over at the expense of a goal kick to the Bengal team. Raja Barman there on your screen, the number 21, coming up with his goalkeeper's goal kick over there, right into the services territory, but the Bengal players unable to get to it, and the ball on the far side with Amal Das, the services right finger, gives it to Liton Sheel. Still Liton Sheel working his way past two players, but can't get the better of Tarak Hemram, who tackles him, losing out Tarak Hemram there to the services midfielder. That's Deepak Singh. Once again, it's Liton Sheel with the ball on the far side. Services on the attack, but nice move. This could be dangerous inside the box over there, but once again a nice pass there from the midfielder. That was Christopher Kemai, who opened up the defense for Shreyas. Shreyas coming up with a right-footed shot there, but just wide of the left upright. Bengal surviving a very, very close call indeed. Yes, Mahesh. बिल्कुल लगातार 1 मिनट के अंदर वहाँ पर रोनाल्डो सिंह ने एक किक मिस की, उसके बाद में क्रिस्टोफर केमी, उन्होंने ये मिडफील्डर जो है उन्होंने ये किक मिस की। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रयत्न, एक अच्छा जो कोशिश हुई थी वहाँ पर सर्विसेज द्वारा, वो यहाँ पर जाता रहा, और दोनों ही टीम मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोशिश करेगी अच्छा प्रदर्शन करने की, लेकिन 2 प्रयत्न यहाँ पर सर्विसेज के द्वारा विफल हुए हैं। पास 17 नंबर के खिलाड़ी सुनील लेते हुए, डिफेंडर उनके आगे की तरफ पास दिया रोनाल्डो लिटल सील के पास, और बाएं फ्लैंक से आक्रमण की तैयारी, पास दिया क्रिस्टोफर ने सामने की तरफ, और वहां पर श्रेयस उसे नहीं ले पाए, और आगे की तरफ हवा में चीप करता हुआ इस बार किक लेने की कोशिश विश्वजीत हेमराम की, और सामने वाले छोर पर हेडर के जरिए उसे रोका, उसकी रफ्तार कम की, और सेंट्रल लाइन पर इस समय पास दिया, तिरछा पास रोक नहीं पाए वहां पर अमित चक्रवर्ती, और थ्रोइन इस समय पक्ष में सर्विसेज के खिलाड़ी सुनील इस समय थ्रोइन करते हुए सामने खिलाड़ी के पास दिया, सामने तिरछा पास, और उसके बाद में निकलने की कोशिश की, थ्रू पास देने की कोशिश बैक साइड में, बैक पास, और इसके बाद में आगे की तरफ यहाँ पर सुरेश मेती जो कि कप्तान है उन्होंने आगे की तरफ बढ़ा दिया, बाएं फ्लैंक की तरफ से यहाँ पर आक्रमण की तैयारी, लेकिन गेंद वहाँ पर टच लाइन के बाहर। तो निश्चित रूप से यहाँ पर दोनों टीम से कोशिश की जा रही है, लेकिन जहाँ तक सवाल है यहाँ पर सर्विसेज टीम ने अपनी बढ़त या अपनी जो मंसूबे हैं वो साफ जाहिर किए हैं, बड़े मंसूबे के साथ, इच्छाओं के साथ, और बहुत तेज तर्रार फुटबॉल का खेल दिखाते हुए अपना दबदबा यहाँ पर उन्होंने बनाए रखा है, और ज़्यादातर पोजीशन पे पास ही रखे हैं। सेंटर लाइन से जो गेंद निकली थी उसके बाद टच लाइन से बाहर की तरफ थ्रोइंग इस समय पक्ष में सर्विसेज के। ज़्यादा खिलाड़ी 1 2 3 खिलाड़ी बिल्कुल वहाँ पर जो पेनल्टी बॉक्स है, पेनल्टी वहाँ पर तैयार है, लेकिन यहाँ पर तिरछा पास देकर 3 खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर क्रिस्टोफर ने तिरछा पास दिया 17 नंबर के पास, और सुनील भी ने आगे की तरफ बढ़ाया, लेकिन अच्छा बचाव किया अपनी टीम के लिए। वहाँ पर रॉबिन हंसदा ने नीचे गिरे, बैलेंस वहाँ पर अपना खोया था खिलाड़ी
दीपक सिंह ने, लेकिन खेल आगे बढ़ता हुआ, तिरछा पास, फिर वहां पर अपने खिलाड़ी के पास बैक पास, इस समय फिर दोनों खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को पास देते हुए भूमिका बना रहे हैं, एक रणनीति तय कर रहे हैं कि किस तरह से आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा जाए। Services certainly seeming to have the edge as far as the exchanges are concerned, with Pintu Mahata, Christopher Kamai and Deepak Singh opening up the Bengal defence for Shreyas, and Shreyas coming up with a blazing right footer over the crossbar minutes ago. Once again they're on the attack there at the top of the box to the right flank, and a foul there by the Bengal number 19, that is Totan Das on I think that is Ronaldo Singh over there, and a free kick to Services from just outside the 18-yard penalty box on the Bengal right flank. There you see it on the screen, the ball being placed for that free kick. The referee asking Christopher Kamai to wait for the signal before he could take it. The Bengal players forming a three-man wall over there to block the first angle, and let's see what Kamai can do with this expected left footer. Will he curl it straight or will he lob it into the box? 5-6 Services player inside the 18-yard box over here. There goes the whistle, and in comes the lob, but lovely shot over there, but the ball just missing the far corner and lobbing at the top of the net. A nice effort indeed, a little lower would have spelled danger. You see the replay of that effort over there. The ball just lobbing over the crossbar and to the top of the netting, and the Bengal goal surviving another scare. Shreyas banged it over, and now Christopher Kamai puts his free kick over the bar. So it's Bengal 0, Services 0. 10 minutes having gone in the first half of the second semi-final of the football competition of the 36 national games at the Trans Area here in Ahmedabad. Amit Chakravarti trying to initiate a move on the right, but cut away there by the defender. Once again tries to beat the captain Suresh Methi, comes up with a long lob there intended for the left half Litton Shield, but Litton Shield is fouled there, and the ball put over by the Bengal defender for a throw in favor of the Services team. Suresh Mitai, the number 22, and Litton Shield over here, but tackled and intercepted nicely there by the Bengal stopper. That's Biswajit Hembrom, the player still lying injured on the field over there. The referee stopping play for Litton Shield to get some attention. There you see it on your screen. Litton Shield injured as a result of the tackle. There you see that pass, and there you see the tackle from Biswajit Hembrom, which resulted in the injury to Litton Shield. Of course, unintentional. The two players going for the ball. Litton up on his feet over here, and the referee restarting the ball, giving the ball to the Bengal players as they had possession at the time of the stoppage. And the wing back Totan Das trying to push it forward down the left flank. Oni Marius to play the ball over the line for a throw into Services. Bengal still struggling to get in terms with their passing game over here, and Services certainly looking the fitter and the more energetic of the lot in this phase of the game so far, having the edge in midfield proceedings and also at the top of the 18-yard penalty box. Bengal yet to come close to scoring in the 12 minutes that have gone so far. A long pass on the left flank there, chasing it down the left flank. There is the Bengal linkman Akash Mukherjee, unable to get to it. It goes over the line for a throw in there. There you see it, the Services number 15. Novin Gurang there. Novin Gurang with a throw in, but put over the line once again by Totan Das. Another throw in there near the center line on the far side. Services certainly asking the questions of Bengal over here in the first quarter of this game, and how much they can do to translate their evident superiority into numerical terms. Only time will tell. Services once again with a throw in on the far side over there. A lob towards the Bengal box. Biswajit Hembron comes up with a hefty clearance, sending the ball wide into the stands, also barging into the attacker there, and the flag going up, but possibly only for a throw in. Yes, Mahesh. भरसक कोशिश यहाँ पर जारी है सर्विसेज की तरफ से आक्रमण करने की, और निश्चित रूप से एक दो मौके जो मिले थे शुरू में वो थोड़े से व्यर्थ गए, लेकिन यहाँ पर दीपक सिंह पेनल्टी बॉक्स के बिल्कुल सामने वहाँ पर
जद्दोजहद करते हुए, संघर्ष करते हुए कि वहाँ पर गेंद का पोजीशन उन्हें मिले और गेंद बनाने के लिए वो कोशिश करें। 17 नंबर के खिलाड़ी इस समय थ्रो इन करते हुए सुनील भी उन्होंने अंदर की तरफ दिया, लेकिन वहाँ पर 3 खिलाड़ी मौजूद है, अगर कोई मौका मिलता है तो उसे कन्वर्ट करने का, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छी तरह से बचाव किया वहाँ पर अपने टीम के लिए वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी ने। और निश्चित रूप से वेस्ट बंगाल और सर्विसेज के खिलाड़ियों के बीच में ये जो संघर्ष इस समय चल रहा है, यहाँ पर लाल कलर में जो खिलाड़ी दिख रहे हैं आपको, ये सर्विसेज के खिलाड़ी हैं। आगे की तरफ पास दिया वहाँ पर सुरेश मेथी के पास, आगे की तरफ फिर गेंद बढ़ा दी, लेकिन वहाँ फिर पोजीशन छूटता हुआ 4 नंबर के खिलाड़ी निकल कर आए थे यहाँ पर दीपक सिंह, और वापस दिया है गेंद अपने सहयोगी खिलाड़ी के पास। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। जहाँ तक सर्विसेज का सवाल है, वेस्ट बंगाल का सवाल है, यहाँ पर किक लेने के लिए तैयार होते हुए 4 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी इस समय 3 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी सर्विसेज के नीचे गिरे। फिसलन जो वहाँ पर थी, विश्वजीत हेम्ब्रॉन अपना संतुलन खोया, लेकिन ऑल अलोंग द कारपेट जिसे कहते हैं, इस तरह से का शॉट उन्होंने दिया था और गेंद सामने जा रही है, बाउंड्री जो उनकी गोल लाइन है उसके बाहर। तो 0-0 स्कोर है अभी तक। 15 मिनट का वक्त यहाँ पर हो चुका है और 15 मिनट का वक्त होने में कोई गोल अभी तक हुआ नहीं है। वहाँ पर गोल किक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं सर्विसेज के गोलकीपर भविंद्रा मल्ला। इस किक के बाद कमेंट्री में परिवर्तन होगा, आएंगे यहाँ पर मेरे साथी कमेंटेटर आशीष सरंगू। First quarter of the game gone through. Services nil, West Bengal nil. Services certainly appearing on top here. Lytton Shield with the attack on the left flank. Into the box he goes, but a foul there. And I think that's going to be a yellow card. Yes, it is for Amit Chakravarti for that foul on Lytton Shield, being brought down outside the box over there and getting booked. The first yellow card of the second semi-final. There you see it, that tackle and that infringement there by Amit Chakravarti on Lytton Shield, and the referee having nothing doing, he says, Williams Joy Kushi booking Amit Chakravarti for that foul there on Lytton Shield. There you see it, Amit Chakravarti, the number 18, getting the yellow card, the first caution of the second semi-final. What do you think, Ashish, is going to happen here? फिलहाल तो सेना की टीम ने, या सर्विसेज की टीम जिसे आप कहें, उसने काफ़ी हद तक इस समय दबाव में रखने में कामयाबी हासिल की है। शुरुआती 15 मिनट के खेल में फ्री किक लेने के लिए वहां पर तैयार इस समय सेना के खिलाड़ी, और सीधा नियर पोस्ट पर जाकर उनका निशाना लगता हुआ पिंटू महाता थे, जो कि मध्य पंक्ति के खिलाड़ी हैं। निश्चित रूप से उसका कोई लाभ नहीं होने वाला था। दोनों ही टीमें फिलहाल 0-0 की बराबरी पर हैं। पश्चिम बंगाल और सर्विसेज की टीम इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में, जो कि पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतर्गत खेला जा रहा है 36वें राष्ट्रीय खेलों के तहत, एक लंबा ऊंचा शॉट राजा बर्मन का, गेंद को वहां पर सुरेश मतई ने क्लियर किया। गेंद तक पहुंचने का प्रयास वहां पर जरूर करेंगे रोनाल्डो, लेकिन अपने इरादे में कामयाब नहीं रहे। इसी बीच गेंद को संभाला वहां पर राइट फुल बैक ने नवीन गुरंग। इस समय गेंद को अपने कब्जे में करने की कोशिश करते हुए नवीन गुरंग का एक लंबा चिप पेनल्टी बॉक्स के ऊपर, लेकिन गोल रक्षक काफी अच्छे पूर्वानुमान के साथ राजा बर्मन आगे की तरफ निकले और गेंद को अपने कब्जे में किया और किसी भी संभावित खतरे को पूरी तरह से टाल दिया। वहां पर लंबा ऊंचा वॉली शॉट सीधा वहां पर राजा बर्मन का पहुंचता हुआ इस समय सर्विसेज के हाफ में, सर्विसेज के नारोहरी वहां पर, जो कि अब तक 2 गोल कर चुके हैं इस प्रतियोगिता में अपनी टीम के लिए, लेकिन इस बार उनका पास गलत और गेंद इसी बीच हमारे नजदीक छोर से बाहर की तरफ निकलती हुई। 18वें मिनट में खेल चल रहा है। अमित चक्रवर्ती इस समय तैयार ये थ्रो इन लेने के लिए। नारोहरी के पास गेंद, जो कि अपनी टीम के कप्तान है, एक बार फिर से बैक पास के रूप में अमित दास के पास गेंद। पेनल्टी बॉक्स के ऊपर नारोहरी के लिए चिप जरूर किया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। आसानी के साथ स्टॉपर ने वहां पर गेंद को क्लियर कर दिया और किसी भी तरह के खतरे को इस तरह से पूरी तरह से वहां पर टाल दिया। दोनों टीमें अभी भी 0-0 की बराबरी पर हैं। 19वें मिनट में इस समय खेल चल रहा है। फ्लड लाइट्स में अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में फ्री किक लेने के लिए वहां पर तैयार हैं सर्विसेज के बाबिंद्रा ठाकुरी। लंबा ऊंचा शॉट उनका और लंबे ऊंचे कद के विश्वजीत हेम्ब्रम ने उस गेंद को क्लियर किया। नारोहरी के पास गेंद, नारोहरी ने वहां पर गेंद को निकाला था अपने साथी खिलाड़ी
वासुदेव मंडी के लिए। और इसी बीच गेंद दूर वाले छेर पर पहुंची है। देखना है कि क्या वहां पर सर्विसेज के खिलाड़ी गेंद को अपने कब्जे में कर पाएंगे या फिर गेंद को गोल रेखा से बाहर जाने देंगे। गेंद गोल रेखा से बाहर होती हुई और गोल किक के लिए इस समय तैयार हैं बविंद्र ठाकुरी, और इधर कमेंट्री के लिए अंग्रेजी में तैयार है मेरे साथी संजीव मुखर्जी। संजीव, स्वागत है आपका। Thank you very much, Ashish. Very good afternoon, good evening, one must say. It's pretty hot. Doesn't seem like evening now, and still it's goalless proceedings. Fairly intense battle there between services who are looking to get into the finals of the National Games men's football competition for the very first time. Bengal, they won it twice, been a runners-up too, but we'll have to see who wins tonight, or does services upset the apple cart. Services defense still holding fort. Good, nice skill. Down the right, Sunil B, very influential player. But here we can see Litton failing to control. Quick throw in there from Bengal. Narahori on the ball. Squeezes it forward, taken away. And you can see a pack of at least 3 services defenders whenever the Bengal forwards are moving into their box, or rather towards that box. Long pass, good pass down the right. He's coming into the inside right channel. He's got pass one. Will he square? Will he center? He's taking a bit of time. He does finally. Little out of position. Services with the ball. That's a chance. He's blasted it wide. He should have certainly done better. He certainly should have done better. Never mind the angle. There you go. A melee and the ball falling right at his foot. He should have blasted it home. If you don't take your chances in these big games, it's a problem. It's a problem. Because you need to score. You need to score, and you need to score soon. Midfield action here. Services on the move. Bengal trying to snatch the momentum back, and it will be an interesting battle. And of course, Biswajit Bhattacharya, the famous former Indian striker, was played in the Kolkata Maidan with a lot of repute and eminence. He's coaching the team. He's decided with the 4-4-2 combination. On the other hand, services slightly advantageous, more adventurous, or one would say. 4-3-3, tussle tussle there. And of course, the assistant referee waving his flag for a throw-in in favor of services. The last game which services played was very, very good. We actually saw the skill level of the team and how they take to this match, playing under the lights. That's also another interesting thing where one has to watch out for. Navin Gurung, long throw, flick back, good idea, poor execution though. Bengal on the move, but there's an intervention. Manorhari, very stoutly built Bengal captain. Another long crossfield pass, easily headed out by Biswajit, the coach's namesake, for another throw-in in favor of Bengal. Beg your pardon, services. Bengal trying to figure out how to handle the services. Extremely energetic, very strong players, very skillful. And how Bengal takes them on, that's also important to see. Quick pass, Narahori threading it in with the 1-2. That was a good ball for Shurajit, but intervention immediately. Services quickly on the ball, trying a crossfield. Referee comes in between. A number of times, Ashish, we have seen players trying to pass the ball at very, very critical junctures. The referee unable to move out of the way. So he has to... Right, he bounces the ball in its favor of services. They want to build it up again. Navin Gurung. What does he do? Sunil B waiting on the left, extreme left. Very, very important player. Keep your eyes on him, number 17. Oh, that's a lovely pass. But Deepak, does he get to the ball? He doesn't. He doesn't. He doesn't. Brisk start, Ashish, but either team not able to match the intensity with the finishing. बॉल पोजीशन ज़्यादातर अभी तक सर्विसेज की टीम के पास रहा है और कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल की टीम को काफ़ी हद तक दबाव में भी रखने का जो उसका प्रयास है उसमें भी वो सफल रहे हैं। शुरुआती यदि आप 23 मिनट की बात करें
इसी बीच एक लंबा किक वहां पर हेम्ब्रम का और हेड द्वारा गेंद को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश, वहां पर गेंद को अपने कब्जे में किया हुआ पी क्रिस्टोफर ने बैक पास के रूप में दे दिया है नवीन गुरुंग के लिए, जो कि दूर वाले छोर पर इस समय अपने साथी खिलाड़ियों का स्थान देखते हुए अंततः पलटे वापस गेंद को समानांतर पास के रूप में अमलदास के लिए, और अमलदास ने वहां पर गोलरक्षक के लिए गेंद को निकाला, खतरा हो सकता था, जबकि चार्ज करते हुए वहां पर रॉबी हंसदा पहुंचे थे। थोड़ा सा देरी अगर गोलकीपर से और हो जाती क्लियरेंस में तो एक मौका वहां पर बन सकता था। इस तरह के पासेस, बैक पासेस कई बार खतरनाक साबित होते हैं। इस बार विश्वजीत हेम्ब्रम गेंद को अपने ही हाफ में संभाले हुए लंबा थ्रू पास, लेकिन बीच में ही अच्छा इंटरसेप्शन, गेंद को निकालना चाहते थे वहां पर दीपक सिंह के लिए, और वहां पर एक लंबी दौड़ लगाकर श्रेयस भी पहुंचे थे, लेकिन गेंद को वहां पर आसानी के साथ क्लियर कर दिया राइट फुल बैक ने। और इस समय ये थ्रो इन का अवसर सर्विसेज की टीम के लिए केरल के हाफ, वेस्ट बंगाल के हाफ में हमारे नजदीक वाले छोर पर। दोनों ही टीमें फिलहाल 0-0 के बराबरी पर हैं। विश्वजीत भट्टाचार्य वेस्ट बंगाल के कोच, प्रशिक्षक, अपने समय के जाने माने स्ट्राइकर, ईस्ट बंगाल की तरफ से खेलते थे, भारत का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। नेहरू कप 1984 में उन्होंने पोलैंड के खिलाफ गोल दागा था, और ये एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि उस टूर्नामेंट का वो एकमात्र गोल था जो कि किसी भी भारतीय खिलाड़ी की तरफ से किया गया था। और इस समय उनकी क्या शैली है, वेस्ट बंगाल किस तरह से खेलेगा, अगर वेस्ट बंगाल फाइनल में पहुंचता है तो उसे जांचने परखने के लिए इस समय सामने वाले स्टैंड्स पर केरल की टीम मौजूद है। लेकिन फिलहाल इस समय आक्रमण बनता हुआ वेस्ट बंगाल की टीम का, लेकिन वहां पर बहुत तेजी के साथ सुरक्षा पंक्ति ने अपने कब्जे में किया। लिटन शिल इस समय गेंद को संभाले हुए बैक पास के रूप में गेंद को दे दिया अपने साथी खिलाड़ी अमलदास के लिए। अमलदास ने समानांतर पास के रूप में इस समय गेंद को बढ़ा दिया है वहां पर अपने साथी खिलाड़ी नवीन गुरुंग के पास। आज लिटन शिल भी टीम में शामिल हैं। आपको याद होगा कि रेड कार्ड उन्हें दिखाया गया था अपने ग्रुप के दूसरे मुकाबले में, जो कि केरल के खिलाफ था, और उसके बाद उड़ीसा के खिलाफ वो मैच में खेले नहीं थे। हालांकि उस मैच में 3-0 से विजय हासिल की थी सर्विसेज की टीम ने। इसी बीच खतरा अवसर है वहां पर, और इसके साथ ही गोल। पहला गोल करने में वेस्ट बंगाल की टीम कामयाब हुई खेल के 26वें मिनट में, और सुरजीत हंसदा को जैसे ही वहां पर अवसर मिला पेनल्टी बॉक्स के अंदर, उन्होंने मौका नहीं गंवाया। ये देखिए किस तरह से हवा में तैरता हुआ क्रॉस आया, अपने दाएं पैर से गेंद को नियंत्रण में किया, नियंत्रण छूटा, फिर प्रयास किया, लेकिन डिफेंस लाइन पर खिलाड़ी के पांव से लगती हुई गेंद सीधा गोल पोस्ट के अंदर चली गई। तो एक गोल की बढ़त इस समय यहां पर वेस्ट बंगाल को इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में मिल चुकी है। Absolutely, West Bengal striking first. Of course, we'll have to check whether the goal has been credited to Surajit or is it Deepak who had the final touch. Failing to clear the ball, failing to clear the lines, and for once Sunil B was caught napping. He was unable to go to the ball. Services, how do they come back? Quick build up. Christo chips it forward for Deepak. Deepak tries to square it back. A little too acute for his own liking. Ball is back in Bengal's control, but of course they're trying at level best services to take the game, force the pace, break down the lines, the strategy. Touchline tussle there between Pinto, and of course that's a throw in for services. Bengal in the lead. Surajit with the important crucial strike, though it seemed like services Deepak did try to clear, got a touch and the ball went in. 1-0 to Bengal. Services. Oh, he tries a volley. It comes off the crossbar. What a attempt there from Shreyas. Oh, what a drop volley that was hit in the air. Acrobatic fraction by Shreyas. Something which the Bengal coach Biswajit Bhattacharya himself would remember very, very well from his own playing days. And of course, the referee right now, Williams Joy Koshi, trying to cool down the players, specify the players. Lots of action there towards the Bengal box. What a shot, what a hit it was. Raja flew in the air, but absolutely had no answer. He was beaten all hands down. Just crossbar coming to the rescue. But importantly, services got a free kick from a very crucial juncture. Christo on the ball. You can see 5 services men lining up inside the box, 1 outside. That's Ronaldo. Christo chips it in no man's land. Another kick, and it seems that both of them have gone down trying to get to the ball. And of course
the referee stopping play because medical intervention is needed. We'll go to that visual in just a moment from now. It seemed like another good opportunity there for services. The ball landing right in between the Bengal defenders. And both of them going for the ball at the same time. And in the process, picking up a collision and an injury apiece. You'll have to be very, very careful. And you can see on your screens the Kerala team, who in the first semi-final beat Karnataka. They reached the final. And what they've done, just look at them. They're keeping a close eye on Bengal versus services because they want to know who's going to the finals and how they play. They want a first-hand experience. Very, very good preparation immediately after winning their game. On the other hand, Bengal, obviously with a 1-0 lead, but more importantly, they know the services team can be dangerous any moment of time. Ronaldo, Litton, very good striker. Shreyas, moments ago you saw him try the drop volley. Everybody was beaten, all hands down, including Bengal keeper Raja. Unfortunately, the crossbar coming to the rescue of Bengal at this point of time. Services, how do they hit back? Because it's not easy playing football. Even if it's under lights, it's very hot conditions. But of course, the players are here. They know there are no second chances. This is the game that decides it all. Either they go to the semi-final or they catch a flight back home. What is it going to be? Bengal versus services. The game all of you have been waiting for. Coming to you live from the Trans Stadia Arena here in Ahmedabad of the 36th National Games. The Kerala team still there, trying to catch highlights of their own match on their mobile phones, even as they try and catch the action and see and trying to figure out both the teams, be it Bengal or services. Who goes first? Who goes better? Referee Williams Roy Koshi with the ball in his hand is going to start the game immediately. We can see Surajit and Shreyas, they're both fit. They've re-entered the field. And action continues in the services half. They'll try and maintain position. But here they haven't. Bengal on the ball. Tarok sliding through, but failing to keep control of the ball, which results in a throw-in for services. And with that, there's a change in commentator. Ashish and myself will be taking a leave for a short while. And on the microphone right now, SS Sri Kumar and the one, the only Mahesh Tiwari. धन्यवाद संजीव. और यहाँ पर खेल आगे बढ़ता हुआ बाएं सामने वाले छोर से यहाँ पर लगी हुई तारक हेमरान और उनके सहयोगी ने वहाँ पर गेंद को आगे बढ़ाया. रॉबी हंसदा थे और रॉबी हंसदा ने वहाँ पर पास दिया और गोलकीपर वहाँ पर जाकर रोक रहे हैं. हालांकि आखिरी वक्त पर भी वहाँ पर कोशिश कर रहे थे सुरजीत हंसदा की बैक किक मार के वो किसी तरह से गोल पोस्ट में दाग दे. और सुरजीत हंसदा ही थे जिन्होंने 26 मिनट में 1-0 की बढ़त यहाँ पर दिला दी है अपने टीम को. वेस्ट बंगाल 1 गोल के मुकाबले 0 से इस समय आगे चल रहा है और निश्चित रूप से बढ़त सेमीफाइनल सेकेंड सेमीफाइनल की है जो जीतने वाली टीम है केरला के खिलाफ यहाँ पर खेलेगी इस टूर्नामेंट का फाइनल. तो दोनों ही टीमें बेताब हैं और बहुत ही मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ संघर्षपूर्ण खेलने की कोशिश में लगे हुए. जबकि पास दिया वहाँ पर पिंटू के पास और पिंटू ने आगे की तरफ बढ़ाया गेंद को. 2 बिल्कुल थ्रू पास श्रेयस के पास. श्रेयस ने फिर बैक पास किया वहाँ पर पिंटू महाता के पास और बाएं छोर से यहाँ पर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए रोनाल्डो सिंह बिल्कुल पेनल्टी बॉक्स के अंदर प्रवेश किया उन्होंने और तिरछा पास दाहिने पैर से, लेकिन दिशाहीन काफी दूर से वो गेंद अंदर की तरफ गई और कोई वहां पर खिलाड़ी दूसरा नहीं था सपोर्ट के हिसाब से. अन्यथा ये मौका यहाँ पर बन सकता था लेकिन इतनी ज्यादा उसमें न डायरेक्शन था न उतनी तेजी थी. बहुत अनियंत्रित दिशाहीन उनका ये किक बाहर की तरफ जाता हुआ. Yes, Mahesh, good attempt there nevertheless by Ronaldo Singh, who cut in, opened up the angle and tried to shoot, but went wide of the left hip right. Bengal 1, services 0. 33 minutes of play gone into the game, and certainly this is going to be a very, very interesting encounter here. The credit for the Bengal goal should go to Deepak Kumar Rajak, who came up with a lovely backheel pass for his overlapping wing back Totan Das. Totan Das's floater came into the box, and Surajit Hansda, missing it the first time, managed to buzz the net at the second attempt to give Bengal the lead. So that's how the goal came over there. But this time the
lob from the services right wing back. That is Amal Das right into the Bengal box, straight into the grasp of the custodian Raja Barman. There you see him on your screen, coming up with a long lofted goalkeeper's clearance, dropping into the services territory over there, but cut away nicely by the defense. Once again a back heel pass. Sunil trying to work up a move, and here is Lytton Shield trying to chase the ball over there, put over the sideline for a throw in. Ronaldo Singh taking that throw in quickly, giving it to Pintu Mahata. Still Mahata, the number 13 on your screen, and still to the overlapping Amal Das on the right. Services on the attack, a long lofted pass intended there, but Amit Chakravarti comes up with the clearance, the number 18 there, avoiding danger for Bengal. Sunil, the services defender, coming up with the lob, but cut away once again by Amit Chakravarti. Surajit Hansda with the ball, the number 20 on your screen, pushing it on the far side to Narawari Shrestha. Narawari Shrestha once again to Surajit Hansda inside the box, on the far side over there to the overlapping wing back, but Deepak Kumar Rajak, but he plays it wide of the mark over there, and Deepak Kumar Rajak unable to get it to it, but nevertheless it hits the services wing back and goes over the line for a throw into Bengal. There you see it, Totan Das, the man who can conjure up that goal for Bengal from the left with that throw in, coming up with another lob. Oh yes, Shrestha goes up for the ball, but so does the goalkeeper Babindra Malla Thakuri of the services, who gets the better of Narawari Shrestha there in that aerial duel and takes control, throwing it on the right flank to Amal Das. Services on the attack, but this time a forward pass intercepted there by Biswajit Hembrom. Hembram's clearance only as far as the Bengal services midfielder Pintu Mahata. Pintu Mahata to Amal Das on the right flank. Services attacking from the right. Still Amal Das, but there it is. The ball hitting the Bengal defender, the Akash Mukherjee, and going over the line for a corner kick to services. What services can do with this award, we'll have to wait and see. Trailing by a goal as they are. A lovely goal conjured up there by Deepak Kumar Rajak, who came up with a lovely back heel for the overlapping Totan Das, whose floater was converted there by Surajit Hansda, the second attempt. Nevertheless, it's Bengal 1, services 0. In comes the floater for the corner kick, but cleared away nicely there by the defense, and the danger averted. Nevertheless, the ball comes to the services wing back, and an attempt by Shreyas to go for a back volley misfires over here. Bengal clearing it away. Robbie Hansda, the number 9 on your screen, with the ball. There's a back pass to Totan Das. Totan Das leaving it alone for Basudev Mandi. Basudev Mandi being tackled and dispossessed over there. Services linkman Christopher Kemai into the thick of things very often. Still Christopher coming up with a long pass through to Ronaldo Singh on the left. Bengal services on the attack over there, but Ronaldo Singh unable to get the better of the Bengal defender. Hits Ronaldo Singh and goes over the line. There you see it, that effort from Ronaldo Singh, hitting Ronaldo Singh and going over the line as Amit Chakravarti came up with a sliding tackle on the services winger. Goal kick to Bengal. 37 minutes having gone in the game. The scoreline still reading services 0, West Bengal 1. In comes the goalkeeper's goal kick. Cut away by Ronaldo Singh. Forward towards Lytton Shield. Lytton Shield still, but intercepted by Mandi. Mandi to Narawari Shrestha. Pushes it forward into the box over there for Robbie Hansda, but played far too deep and fast for his comfort. The goalkeeper comes up and makes the collection. Bhavendra Malla Thakuri. There he is still with the ball over there. Long lofted clearance into the Bengal territory. What's going to happen? Yes, Mahesh. काफ़ी देर के बाद ही सही, लेकिन यहाँ पर प्रयत्न जारी करते हुए सर्विसेज के खिलाड़ी 8 नंबर के खिलाड़ी ने पास दिया था, वहाँ पर क्रिस्टोफर केनी ने आगे की तरफ श्रेष्ठ कंट्रोल नहीं कर पाए, और निश्चित रूप से यहाँ पर किस तरह से प्रयत्न किए गए थे, किस तरह से वहाँ पोजीशन लेने की कोशिश की गई थी लिटन सिल, और यहाँ पर जो इंजर्ड हुए हैं खिलाड़ी वासुदेव मंडी, तो नीचे गिरे थे खिलाड़ी, वहाँ पर अभी भी नीचे ज़मीन पर बैठे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ी चोट नहीं होनी चाहिए जिस तरह से वो खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं इस समय। दोनों तरफ से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी दोनों टीम के अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि
गोल करके यहाँ पर सर्विसेज के खिलाड़ी जो 1-0 की बढ़त यहाँ पर हासिल की है वेस्ट बंगाल की टीम ने, कम से कम उसकी बराबरी करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। हेडर्स द्वारा यहाँ पर खिलाड़ी डिफेंड करते हुए उस गेंद को पोजीशन लेने की कोशिश, लेकिन वहाँ पर छीना पोजीशन अपने साथ तारक हेम्ब्राम ने, और आगे की तरफ 2 खिलाड़ियों के बीच में वहाँ पर संघर्ष चला और फिर इस समय रोकने की कोशिश की थी, लेकिन टच लाइन से बाहर। थ्रो इन इस समय पक्ष में सर्विसेज के दीपक वहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ पर इस समय 15 नंबर के जैसे नवीन गुरुंग, उन्होंने थ्रो इन के लिए वहाँ पर गेंद आगे की तरफ बढ़ाई। 2-3 खिलाड़ी वहाँ पर नियंत्रित करने के लिए, और इस बार पेनाल्टी बॉक्स के अंदर वहाँ पर थ्रो किया, लेकिन वहाँ पर बीच में खिलाड़ी ने उसे निश्चित रूप से आगे बढ़ने से रोका। नीचे गिरे हैं अभी तक, शायद किसी तरह से उन्हें चोट लगी है वहाँ पर 18 नंबर के खिलाड़ी अमित चक्रवर्ती, और निश्चित रूप से उन्हें दिशाहीन कर दी उस सारी अपेक्षाओं को जो तिरछे पैर के साथ वहाँ पर लगाई गई थी गोल पोस्ट में दागने के लिए। अच्छा बचाव अपने टीम के लिए किया है यहाँ पर, और जो बचाव हुआ है, अभी तक नीचे गिरे थे वहाँ पर अमित चक्रवर्ती, अब जाकर उठ रहे हैं और देख रहे हैं कि अब खेल आगे की तरफ बढ़े। लेकिन अच्छा संघर्ष यहाँ पर सर्विसेज और वेस्ट बंगाल के बीच में देखने को मिला है, और ये प्रयत्न यहाँ पर होगा कि किस तरह से खेल आगे, यहाँ पर रेड कार्ड या किसी तरह से कोई नहीं, ऐसा लगा कि शायद रेफरी इस तरह के कोई वहाँ पर करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और खेल यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ वो काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ पर वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी गोलकीपर ने, राजा बर्मन ने, उस संभावना को खत्म किया। और एक मानना पड़ेगा कि एक सर्विसेज की तरफ से प्रयत्न तो किए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक सफलता कन्वर्जन का सवाल है वो हो नहीं पा रहा है, और गोलकीपर ने आगे बढ़कर उसे रोक लिया था गोल पोस्ट में जाने से। 5 minutes left in the first half. The scoreline still remaining West Bengal 1, Services 0. Services coming close to scoring the equalizer. That effort from Shreyas, crashing onto the Bengal bar on the first bounce. Bengal on the attack once again from the right. Mandi to Amit Chakravarti, the number 18 on your screen. Back to Mandi once again, pulling it back on towards Tarak Hembram in midfield. Tarak still playing a 1-2 with Robbie Hansda, but losing possession over there as Sunil takes charge, giving it to his captain Suresh Mithai. Mithai on the far side to Gurung. Novin Gurung with the ball there on the far side, giving it to the midfielder Christopher Kemai. Back to the stopper once again. Sunil B coming up with a long lob, but cleared away nicely by Akash Mukherjee, the number 17 in the Bengal defence, at the expense of a throw-in to the services team from inside their own territory on the right flank. There you see it, Novin Gurung picking up that ball for that throw-in, pushes it down to Shreyas, but Shreyas loses control, and the clearance from the wing-back Akash Mukherjee going over the line after hitting the services wing-back Amal Das. Throw-in Bengal. Bengal 1, services 0. A long forward pass in no man's land over there. Taken control of by the Bengal defence. Back to the goalkeeper. Raja Burman surveying the field, unchallenged over there. No services striker anywhere near him. He takes his own time to effect that clearance. Headed away back by Sunil, but the long clearance once again by Akash Mukherjee at the top of the penalty box in the services half. And once again Surajit Hansda lobbing it more in hope than in any substance over there. Straight to the goalkeeper, who rolls it across for Sunil. Sunil to Ronaldo Singh, cut away nicely by Surajit Hansda once again. Plays a 1-2 with his midfielder Tarak, but losing out is Tarak once again to the stopper Sunil, and this time the lob headed safely back to the goalkeeper by Totan Das, the number 19 for Bengal on his screen. The goalkeeper dribbling the ball and picking it up there on the far side of the penalty box. That's Raja Burman as he prepares to effect his goalkeeper's clearance over there. Time ticking away in the first half. Just about 2 minutes remaining for services to do something to draw level. They trail by a goal. Yes, Mahesh.
कुछ नया करना होगा यहाँ पर। वेस्ट बंगाल की टीम ने भले 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है, जिस तरह से वहाँ पर उन्हें मौके भी मिल रहे हैं और दूसरी तरफ से मौके सर्विसेज को भी मिले हैं, लेकिन जहाँ तक कन्वर्जन का सवाल है, जहाँ तक कन्वर्ट करने का सवाल है, वो नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर सर्विसेज के खिलाड़ी। इस बार गेंद को तिरछा पास देते हुए अपने सहयोगी खिलाड़ी के पास आगे की तरफ बढ़ाया वहाँ पर तारक हेमरॉन ने। अब उसके बाद आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश में हुई सुरजीत ने अंदर की तरफ प्रवेश किया है पेनाल्टी बॉक्स में। नीचे गिरते हुए अमित चक्रवर्ती, वहाँ पर जो बचाव करने वाले खिलाड़ी थे, उन्होंने शायद उन्हें बढ़ने से रोका और जो खतरा वहाँ पर हो सकता था शायद अब इस किक के जरिए, जो कॉर्नर किक के जरिए ली जाएगी, शायद वहाँ बचने का मौका जरूर मिले। इसलिए शायद जो खतरा वहाँ पर हो वो खतरे को टालने के लिए ये प्रयत्न किए गए हैं और कॉर्नर किक के जरिए आखिरी कुछ लम्हे इस पहले 45 मिनट के इंजरी टाइम वहाँ पर ऐड किया जाएगा। तो कितना वक्त मिलेगा वो देखने लायक बात होगी, लेकिन आखिरी समय में भी यहाँ पर प्रयत्न जारी है वेस्ट बंगाल के कि इस में और एक हाथ गोल करके यहाँ पर बढ़त हासिल कर ली जाए। किक और वहाँ पर बचाव करते हुए गोलकीपर खुद भविंद्रा मल्ला ठाकुरी ने रोका। खेल आगे की तरफ बढ़ता हुआ 45वें मिनट में खेल पहुँच चुका है, बशर्ते इसमें अब अतिरिक्त जो समय है इंजरी टाइम वो ऐड किया जाएगा। तो देखना ये होगा कि बढ़े हुए समय में कितना समय मिलता है और क्या यहाँ पर सर्विसेज की टीम जो 1-0 की बढ़त 1-0 से पीछे चल रहे हैं इस समय, उसमें किसी तरह का बदलाव करने में सफलता हासिल कर पाते हैं। यहाँ पर दुधिया रोशनी में, यहाँ पर फ्लड लाइट्स में खेला जा रहा है ये मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला और 3 मिनट का अतिरिक्त समय एड ऑन मिला है। तो 3 मिनट का वक्त और मिलेगा यहाँ पर सर्विसेज को कि बराबरी करने के लिए वो अपने तरफ से प्रयत्न करें, एक अच्छी रणनीति तय करें, अच्छे तालमेल के साथ आगे बढ़े, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और उसके बाद यहाँ पर व्यर्थ जाता हुआ ये प्रयत्न, पोजीशन अगर आप खो देते हैं, अगर किसी भी तरह से बचे हुए 2 मिनट में अगर आप गोल नहीं करते तो मिला हुआ 3 मिनट का वक्त भी आप जाया कर देते हैं। फ्लड लाइट्स के अंतर्गत चलता हुआ मुकाबला और दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला इंतज़ार करते हुए केरला की पूरी टीम जो सामने वाले छोर पे बैठी हुई है, देख रही है इस खेल को बहुत नज़दीकी तौर पे और यही होना चाहिए कि अपने प्रतिद्वंदी कौन सी टीम इसमें से आएगी और किस तरह का खेल उनका होगा, उसके हिसाब से अपनी रणनीति तय करने के लिए सारे खिलाड़ी जीतने के बावजूद, थकने के बावजूद यहाँ पर इस स्टेडियम में मौजूद है। तिरछा पास और बिल्कुल टच लाइन के बिल्कुल सामने वहाँ पर रोका, आगे की तरफ थोड़ा सा चेप करता हुआ इस स्ट्रोक वहाँ पर और आगे की तरफ बढ़ते हुए अमित चक्रवर्ती बहुत तेजी के साथ आक्रमण करने वाले खिलाड़ी हैं, सफल करते हैं राइट साइड से कंट्रोल करते हुए वहाँ पर 2 खिलाड़ी और बिल्कुल वहाँ पर किक का इशारा किया है खिलाड़ी ने वहाँ पर रेफरी ने और किक ले रहे हैं वहाँ पर गोलकीपर, यहाँ पर गोल किक के हिसाब से और लहराती हुई हवा में तैरती हुई विपक्षी पालने में गिरती हुई गेंद और इसे फिर से नियंत्रण में करने की भरसक कोशिश सर्विसेज के खिलाड़ी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता उन्हें हासिल नहीं हो पा रही है। जिस तरह से यहाँ पर अब प्रयत्न किया जा रहा है, तिरछा दाहिने पाए से वहाँ पर मारने की कोशिश थी गोल पोस्ट में अमित चक्रवर्ती ने, वो सफल नहीं हुई, लेकिन निश्चित रूप से ये प्रयत्न विफल हुआ। वहाँ पर 20 नंबर के खिलाड़ी अभी तक सुरजीत हंसदा जिन्होंने 26वें मिनट में गोल किया था, अभी तक नीचे जमीन पर गिरे हुए हैं, शायद किसी तरह से चोटिल हैं, लेकिन फिर खेलने के लिए तैयार होते हुए। Time ticking away for services as we almost approach the end of added on time of 3 minutes over here. This trail by a goal and Bengal at the moment comfortably placed in the first 45 minutes. A very, very brisk and fast-paced encounter this semi-final between these two teams. Services not leaving anything unturned over here in their efforts to get back. Testing Bengal with a series of raids from especially from the left and some from the right as well. But right now Tarak Imran playing a 1-2 with Narawari Shrestha, but Narawari Shrestha is being intercepted and tackled there by Sunil. The ball rolls into the 18-yard penalty box for the goalkeeper to come up with his clearance. Rabindra Malla's clearance headed away back by Litan Sheel on towards the far side, but Deepak Singh unable to make much of it. Cut away nicely by the Bengal defense over there. Robbie Hansda with the ball at the moment. The number 9 on his screen, pushing it to Narawari Shrestha. Narawari Shrestha pushes it on the far side once again to Deepak Kumar Rajak. Still Deepak, and still trying to work his way. Deepak comes up with a cross there, but a very poor one, intercepted very easily by Babindra Malla Thakuri, the goalkeeper.
who comes up with a long lofted clearance. Litton Shield on the left, services on the counter. Litton Shield, and still working his way into the box, and still Litton Shield over here. Comes up with the center, but far too high and wayward there. There's no services player to get anywhere near that ball, and the danger averted as far as Bengal is concerned. Time ticking away at the end of the added on time over here. Services trying to hurry up the proceedings in an effort to get even, but this time the ball put away over the line, and another flag kick to services from the right flank. What will services do with this flag kick? Christopher Kamai, the number 8 on your screen over there, placing the ball inside the quarter circle for that flag kick to be taken. The left footer, in it comes, curling into the box over there, but cleared away by Akash Mukherjee, the tall Bengal stopper. And there goes the whistle for the end of the first session. And after 45 minutes of absolutely intense action, it is Bengal 1, services 0 as the players troop out for the breather. Yes, Mahesh. निश्चित रूप से 45 मिनट और 3 मिनट का एड ऑन वक्त जो दिया गया था वहाँ पर सर्विसेज की टीम कोई कन्वर्जन नहीं कर पाई और 1-0 की बढ़त यहाँ पर मध्याह्न के समय जब खेल रुका है सुरजीत हंसदा ने 26वें मिनट में वो गोल करके यहाँ पर अपने टीम को बढ़त दिला दी है। तो ज़्यादा गोल देखने को नहीं मिले हैं, जो अपेक्षाएं थी सेमीफाइनल की जिस तरह से खेली जाएगी उस तरह से मुकाबला खेला जरूर जा रहा है, लेकिन जो गर्मजोशी और जो उत्साह जो उमंग यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए थी वो उतनी अभी तक सर्विसेज की तरफ से देखने को नहीं मिली है। हालांकि जो खेल वेस्ट बंगाल की टीम ने और सर्विसेज ने किया है वो काबिल तारीफ ज़रूर रहा है। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला यहाँ पर जो चल रहा है सर्विसेज और वेस्ट बंगाल की टीम में, यहाँ पर वेस्ट बंगाल की टीम ने 1-0 की बढ़त यहाँ पर हासिल कर ली है और काबिल तारीफ ये मुकाबला जो खेला जा रहा है एका एरेना ट्रांस स्टेडिया पर, और इस सारी टीमें जो बाहर की तरफ आई थी और उसके बाद हस्तांदोलन करने के बाद एक दूसरे को शुभेच्छाएं देने के बाद मेहमान के द्वारा खेल की शुरुआत हुई थी। सारे ऑफिशियल्स वहाँ पर लाइन अप करके इस मैच की शुरुआत हुई, लेकिन जब जैसे ही खेल शुरू हुआ वहाँ पर वेस्ट बंगाल की टीम नीली जर्सी में नजर आई और लाल जर्सी में वहाँ पर सर्विसेज की टीम, और प्रयत्न जो किए गए वहाँ पर बार बार लगातार वहाँ पर सर्विसेज की तरफ से, और ये पहला गोल वहाँ पर दागते हुए सफलता हासिल की थी सुरजीत हंसदा ने 26वें मिनट में वो गोल अपने टीम के लिए किया था और ये एकमात्र गोल रहा श्री जिसने मध्याह्न के समय समाप्त हुआ है। Certainly, Mahesh, good effort. As I said, a lovely lob there, and that was the highlights that you saw on the screen as Bengal took that lead by 1-0 as the lead in the end of the first 45 minutes. Thank you, sir. महाराष्ट्र का ब्रांच नहीं हो सकता है।
नमस्कार, मैं हूं आशीष चरणगू, अपने साथी कमेंटेटर एस श्री कुमार के साथ आपका अभिनंदन करते हुए अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडिया से, जहां पर इस समय 36वें राष्ट्रीय खेलों के तहत पुरुष फुटबॉल का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस समय यहां पर चलता हुआ। पहला सेमीफाइनल मुकाबला, जैसा कि आप जानते हैं कि केरल की टीम ने कर्नाटक की टीम को 2-0 से पराजित किया था और दूसरे सेमीफाइनल के मध्यांतर तक वेस्ट बंगाल की टीम को सर्विसेज के खिलाफ 1-0 की बढ़त हासिल थी। मध्यांतर के बाद का खेल शुरू होने के लिए तैयार है और इस समय आप सर्विसेज के गोल रक्षक भपिंद्रा ठाकुरी को देख सकते हैं। अपने दोनों ही गोल पोस्ट को छूने के साथ उन्होंने अपने इष्ट देव से प्रार्थना की कि उन्हें सक्षम बनाए रखें ताकि वो अपने गोल की सुरक्षा करें। देखना यह है कि क्या वो ऐसा कर पाते हैं। फिलहाल किक ऑफ के बाद यहाँ पर खेल शुरू होने के लिए तैयार है और वेस्ट बंगाल के रॉबी हंसदा इस समय खड़े हुए बिल्कुल मैदान के बीचों बीच और इधर आज के मैच रेफरी विलियम जॉय कोशी इस समय अपने दोनों असिस्टेंट रेफरीज की तरफ देखकर इशारा करते हुए इस मैच के मध्यांतर के बाद के खेल को शुरू करने के लिए तैयार हैं। एकमात्र गोल जो कि अब तक किया है वेस्ट बंगाल की टीम के लिए, वो खेल के 26वें मिनट में हुआ था जब सुरजीत हंसदा ने वो गोल दागने में कामयाबी हासिल की थी। दूधिया प्रकाश में नहाया हुआ ट्रांस स्टेडिया इस समय आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और इस बीच यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में अब श्री कुमार के स्थान पर मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में संजीव मुखर्जी। तो इंतजार हो रहा है कि कब वहाँ पर खेल की शुरुआत हो। मध्यांतर के बाद की वेस्ट बंगाल और सर्विसेज की टीमों के बीच जो मुकाबला अब तक रहा पहले हाफ में वो कांटे का रहा। दोनों ही टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया और सर्विसेज की टीम एक गोल से पिछड़ने के बाद जो उसकी इंटेंसिटी थी आक्रमण करने की उसको उन्होंने ज़रूर बढ़ाया, लेकिन गोल करने का जहां तक सवाल है वो अब तक नहीं कर पाए हैं। तो देखना यह है कि क्या मध्यांतर के बाद वो बराबरी का गोल हासिल कर पाते हैं नहीं। इसी के साथ किक ऑफ खेल शुरू होता हुआ इस समय नीले रंग की जर्सियों में आप वेस्ट बंगाल की टीम को देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। दाईं तरफ से जो बाईं तरफ आक्रमण करेंगे और शुरुआती क्षणों में ही वहां पर वेस्ट बंगाल की टीम ने आक्रमण करने का प्रयास किया। गेंद इस समय दीपक रजाक के पास, लेकिन उनसे चिंती हुई गेंद हमारे नजदीक वाले छोर से बाहर चली गई। थ्रो इन का अवसर वेस्ट बंगाल को मध्यांतर के बाद शुरुआती मिनट में ही पास दिया वहां पर रॉबी हंसदा के लिए। गेंद को वहां पर निकाल दिया है इस समय अपने साथी खिलाड़ी तारक हेम्ब्रम के लिए। तारक हेम्ब्रम ने बैक पास के रूप में गेंद को निकाला अमित चक्रवर्ती के लिए। अमित चक्रवर्ती ने फॉरवर्ड पास निकाला था, लेकिन एक बार फिर से अमित चक्रवर्ती के पास वहां पर गेंद पहुंची। ऊंचा लंबा लॉब पेनल्टी बॉक्स के अंदर। रॉबी हंसदा ने वहां पर गेंद को कब्जे में किया, लेकिन तारीफ करनी होगी अमलदास की कि उन्होंने दाएं पैर के बाहरी हिस्से से उस गेंद को शॉट लगाकर क्लियर किया। लेकिन इस बीच वहां पर दूर वाले छोर पर खिलाड़ी गिरे हैं सर्विसेज के, जिसकी वजह से खेल कुछ क्षणों के लिए वहां पर रुका हुआ और फाउल हुआ था। दरअसल वहां पर जिस तरह से गेंद को अपने कब्जे में करने की कोशिश की थी वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी ने, और यहां पर इस समय चिकित्सक दल को बुलाते हुए रेफरी विलियम जॉय कोशी, टीम के फिजियो इस समय अग्रसर हो रहे हैं
सर्विसेज के खिलाड़ी की तरफ। और संजीव, सर्विसेज की टीम की निश्चित रूप से तारीफ करनी होगी जिस तरह से इस प्रतियोगिता में जो उनका सफर रहा है अब तक। पहला मुकाबला उन्होंने मणिपुर के साथ बराबरी पर छोड़ा था, अगले मुकाबले में उन्हें केरल से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन डू और डाई मैच में अंततः उन्होंने उड़ीसा की टीम को 3-0 से हराने में कामयाबी हासिल की थी। और याद रहे कि उस मैच में उनके जो प्रमुख स्ट्राइकर हैं लिटन शील, वो उस मैच में नहीं खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी को टीम को 3-0 से पराजित किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह सुरक्षित की थी। तो फ्री किक के लिए तैयार इस समय सर्विसेज की टीम। तैयार हैं टीम के कप्तान सुरेश मताई अपने साथी खिलाड़ियों का स्थान देखते हुए। लंबा किक सीधा वेस्ट बंगाल के हाफ में। वेस्ट बंगाल की टीम इस समय 1-0 की बढ़त हासिल किए हुए है और जिस तरह से वहां पर ये बाधा पहुंचाई गई सर्विसेज के खिलाड़ी दीपक रजाक के द्वारा, बल्कि वहां पर श्रेयस थे जिनके द्वारा ये बाधा पहुंचाई गई और वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी वहां पर इस समय ज़मीन पर लेटे हुए हैं। रेफरी ने अभी तक वर्बल चेतावनी दी है, संभवतः कोई कार्ड नहीं दिखाया है। शुरुआती ही क्षणों में गेंद की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश, खेल की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश वहां पर, और इस प्रयास में कहीं ना कहीं अपना आपा खोते हुए दोनों ही टीमों के खिलाड़ी जानते हैं कि करो या मरो का मुकाबला है। फाइनल में यदि जगह आपने बनानी है तो इस मुकाबले को जीतना ही होगा। ये देखिए दर्शक कुछ यहाँ पर जो इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं और देखना है कि क्या कुछ कर पाती है सर्विसेज की टीम, क्या बराबरी हासिल कर पाएगी या फिर पश्चिम बंगाल की टीम एक बार फिर से इस मुकाबले में अपनी बढ़त के साथ जो उनके पास हासिल है उसे और मजबूत करती है या इसी को बरकरार रखते हुए इस मुकाबले को जीत पाती है। फिलहाल बीच मैदान पर खेल रुका हुआ है और टीम के फिजियो इस समय पश्चिम बंगाल के वहां पर मौजूद हैं। संजीव, स्वागत है आपका मध्यांतर के बाद। जिस तरह से शुरुआती 4 मिनट का खेल लगभग अब तक हुआ है और दोनों ही तरफ से हमने देखा है कि किस तेज रफ्तार के साथ आक्रमण करने की कोशिश की गई है और ऐसे में कहीं ना कहीं खिलाड़ी वहां पर अपना आपा खोते हुए भी नजर आए हैं। That's right, a fair bit of attack and counter-attacks happening there, and of course the collision, the injury there seems to be a little worrying at this point of time. In all likelihood he has to be stretched out perhaps. The medical personnel were immediately there at the command of the referee. An interesting battle as we see the battle lines have been drawn firmly. Bengal going ahead in the first half, but services they have pretty much everything in their arsenal. They can hit back. Couple of chances they got in the first half, which they should have certainly converted. They failed to do that once the crossbar came in the view. And of course the services coach has surely instructed his players how to go about the second half. But Bengal also on the other hand showing no signs of coming away from the attacking mode in which they started game today. But services, compared to the last game which they won 3-0, to pull off a super entry into the last 4 stage, somehow that intensity seems to be missing. They do not seem to have the verve with which they played the last game. Of course they won 3-0. One of the best players, Liton, was not available because of a red card. He's back tonight. Maybe sometimes that's the reason they say, why fix something which isn't broken? Has he fitted well into the team? The combination remains to be seen. And of course Bengal likely to bring in Dipesh Murmu. You can see him warming up on the touchline. Possibly be coming in place of Shurujit. That's jersey number 7, Dipesh Murmu. He's in the midfield. And yes, that's a confirmation. Dipesh is in for Surajit. That's a forced change. Here comes another attack. A ricochet, safely out of the box. The tussle out there in the touchline. Toton. He has the ball taken away. Services will have to be very, very careful. Ronaldo. Oh, lovely pass, but it seems the referee's flag is already up. He was awaiting the feed and he had just skipped away across a situation. And that's the reason the referees looked at the assistant referee, was immediately up with his red flag. How does this force change affect Bengal? That will be interesting to see. Surajit is out, Dipesh is in, number 7. And
Services obviously will be sensing the chances. Do they have a foot in the door? Remains to be seen. Akash Mukherjee on the ball. Where does Akash send this one to? Off he goes. Quick drive. Nice back flick there by Narahori. Will it be easy pickings? Of course yes. Babindra Malla making no mistake whatsoever and immediately kicking the ball out. Services need to attack. Time's running out. Into the 52nd minute. And there the referee rules for another intervention this time. Another clash, another tussle. Things getting a little physical. Possibly with a stretch of the hamstring. That's Biswajit. Try to go for the ball and off he was in the tussle there with Liton. Both colliding there. The free kick awarded to Bengal. So Bengal ahead by 1-0. How do they take this game on in the last 38 minutes or so? Biswajit with the grounder. Trying to play a 1-2. Good, nice turn. Quickly dispossessed. Pinto. He should have had a better approach with the pass. That was a very, very poor effort. His players were getting to the advantageous positions. Unfortunately, his pass, the drive, low right-footed drive from his outstep, wasn't really up to the mark. Babindra quickly kicks it away, but it's headed out by Biswajit yet again out of the touchline. And as you can see, that's the pass. Should have been a better one. However, now we back to the action on the field. Services have a throw-in. That Sunil B strangely looks different from the last time when we saw him. And how does he manage to synchronize the attacks? That's Bengal with the long ball. Very poor clearance. Lots of space, not a hurry. Quick turn, looking for a couple of colleagues. At least 3 of them around him, in and around him. Deepak. Deepak, lovely. Wow, wow, wow. That's Toton. He should have held on to the ball firmly. There was a good interplay between the attackers, unfortunately resulting in nothing. Where is this game headed for, Ashish? दोनों ही टीमों की तरफ से इस समय प्रयास हो रहे हैं लगातार एक दूसरे के गोल मुख तक पहुंचने के लिए, लेकिन गोल करने में मध्यांतर के बाद सफलता नहीं मिली है। और मुझे लगता है कि यदि यहां पर सर्विसेज की टीम बराबरी का गोल करने में कामयाब होती है तो फिर कहीं ना कहीं ये मुकाबला भी संभवतः टाई ब्रेकर की तरफ खिसक सकता है। फिलहाल वेस्ट बंगाल की टीम गेंद को अपने कब्जे में किए हुए अपने ही हाफ में गेंद को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर तारक खेमरम, गलत पास उनका, बैक पास के रूप में गेंद पहुंची है समय अमल दास के पास और एक और बैक पास के रूप में अपने गोल रक्षक बाबिंद्र ठाकुरी के लिए गेंद को उन्होंने पहुंचा दिया। और दूर वाले छोर पर इस समय गेंद को निकाला है सुनील के लिए। सुनील अकेले ही गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए मध्य रेखा को पार किया। अच्छा थ्रू पास वहां पर श्रेयस के लिए, क्या यहां पर लाभ हो सकता है? जी नहीं, गेंद छिटकती हुई वहां पर आसानी के साथ पहुंच गई थी गोल रक्षक के पास। गेंद को वहां पर क्लियर कर दिया गया और जो एक अच्छा मूव बन सकता था उसकी संभावनाएं समाप्त हो गई। और यही कहीं ना कहीं कमी है सर्विसेज की टीम की कि एक अच्छा मूव पनपता है लेकिन कहीं ना कहीं गोल मुख के आसपास या पेनल्टी बॉक्स के आसपास पहुंचते पहुंचते उसका जो मोमेंटम है, उसकी जो ताकत है, उसका जो पैनापन है वो समाप्त होता हुआ नजर आता है। ठीक वैसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर देखा 55वें मिनट में इस समय खेल चलता हुआ और पश्चिम बंगाल के गोलरक्षक राजा बर्मन इस समय तैयार, लंबा ऊंचा शॉट लगाकर गेंद को सर्विसेज के हाफ में पहुंचाया। और सर्विसेज के खिलाड़ी इस समय नवीन गुरंग गेंद को अपने कब्जे में किए हुए फॉरवर्ड पास के रूप में निकाल दिया महाता के लिए। महाता ने वहां पर गेंद को इस समय निकाला लिटन शील के लिए, लेकिन लिटन शील ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और एक लंबे शॉट के द्वारा गेंद को एक बार फिर से सर्विसेज के हाफ में पहुंचा दिया गया है। और इधर कुछ क्षणों के लिए खेल यहाँ पर रुका हुआ है। मैदान पर लेटे हुए हैं बी सुनील जो कि सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ी हैं सेना के। संभवतः उनके बाईं कलाई पर मोच आई है। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पश्चिम बंगाल के सुरजीत हंसदा जिन्होंने कि इस मैच का एकमात्र गोल किया, ही देखिए किस तरह से वहाँ पर टैकल करने का प्रयास किया और जब वो गिरे तो संभवतः उनका जो हाथ था वो नीचे आया जिस पे शरीर का वजन पड़ा और उनके बाएं हाथ की कलाई में थोड़ा सा यहाँ पर मोच है। फिजियो टीम के उनका उपचार करते हुए तो हम बात कर रहे थे सुरजीत हंसदा की जिन्होंने कि अब तक इस मैच का एकमात्र गोल किया है। थोड़ी देर पहले मध्यांतर के बाद चोटिल होने के बाद थोड़ी देर पहले ही उनको एम्बुलेंस में ले जाया गया है। संभवतः थोड़ा सा चोट जो है उनकी गंभीर है और उनके स्थान पर इस समय टीम में खेल रहे हैं दीपेश मुर्मू।
अमलदास वहां पर, जबकि दूर वाले छोर पर इस समय गेंद ड्रॉप करने के लिए तैयार हैं मैच के रेफरी विलियम जॉय कोशी। गेंद को ड्रॉप किया, गेंद को अपने कब्जे में किया सुनील ने, लंबा शॉट लगाया। क्या वहां पर लिटनशील गेंद को कब्जे में कर पाएंगे? कोशिश जरूर की हेडर के द्वारा, लेकिन कामयाब नहीं रहे। लेकिन इसी बीच सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ी से लगती हुई गेंद बाहर चली गई थी। परिणाम स्वरूप ये थ्रो इन का अवसर वहां पर सेना की टीम के लिए, सर्विसेज की टीम के खिलाड़ी इस समय क्रिस्टोफर बैक पास देकर गेंद को अपने कब्जे में करना चाहते थे, लेकिन फिर से थ्रो इन का अवसर उनके लिए बना। सुनील का थ्रो इन, और देखना है कि क्या इस बार वहां पर इस अवसर को भुना पाते हैं या फिर नहीं। और एक लंबा क्रॉस लगाकर लेफ्ट फुट से गेंद को इस समय हमारे नजदीक वाले छोर की तरफ पहुंचा दिया, और वेस्ट बंगाल की टीम के लिए इस समय ये थ्रो इन। वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी बाईं तरफ से आक्रमण करने का प्रयास करते हुए, रॉबी हंसदा के पास गेंद, लेकिन गेंद को बहुत ज़्यादा देर तक अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया, जिसकी वजह से गेंद छिन गई और एक लंबा शॉट लगाकर फिर से सेना के हाफ में गेंद को पहुंचाया था। कप्तान सुरेश मतई ने हेड द्वारा गेंद को क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन दाईं तरफ से इस समय आक्रमण पनपता हुआ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं दीपेश मुर्मू। समानांतर पास के रूप में गेंद पहुंची है इस समय दीपक कुमार के पास। दीपक कुमार ने वहां पर नारोहरी के लिए निकाली थी गेंद, लेकिन लंबा इसी बीच राइट फुटर बिल्कुल जमीन से सटक कर निकलता हुआ गोल लाइन से बाहर, गोल पोस्ट के दाईं तरफ से होता हुआ। काफी कमजोर प्रयास था इस अवसर पर। ये देखिए, जैसे ही गेंद वहां पर मिली, राइट फुटर लगाया, लेकिन दिशा से काफी दूर। किसी तरीके की कोई परीक्षा नहीं वहां पर सर्विसेज के गोलरक्षक भविंद्रा ठाकुर के लिए। 59वें मिनट में खेल चल रहा है। पश्चिम बंगाल की टीम को अभी भी 1-0 की बढ़त हासिल है इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में सेना के खिलाफ। Midfield action there. Services yet to try and open up the Bengal defense. Trying hard. Litton squares it away on the left. They're going to attack through the left channel. Ronaldo has been quiet, hasn't been very, very effective. Deepak there. Quick turn. Sizing up his options. You can see Naveen Gurung on the right. He's overlapped. Come really up. But that's a sliding tackle there. Sliding intervention by the Bengal defense. A miss pass yet again. Quick turn. Pinto. Initial advantage, straying down a little back, the ball going a little back, failing to take hold of the advantageous position they are in. There we go, Naveen Guru on the right. What does he do? Naveen centers, he goes for goal, of course connects, but it had absolutely no power. And more importantly, Raja, the goalkeeper, Bengal goalkeeper, was standing right there, absolutely had to make no effort whatsoever. There you see, very, very good feed. Even a well-timed jump was not able to generate the sort of power that was needed to at least test the goalkeeper, if not beat him. On the hour mark, nearly. And yet services are trailing by a goal to nil against Bengal. Bengal looking to be into yet another final of the national games, while services looking for a maiden entry into the finals. Awaiting the winner of tonight is Kerala, who the entire team is in the stands. They're watching this game with apt attention. Amit Chakravarti. Quick throw in. Quick turn and shot. One fails to understand he had his colleagues on the right and the goalkeeper slid down while trying to take the goal kick. Fortunately for him, the advantage is still not there with Bengal. Ronaldo. But yet again, quickly taken away. And as the action hots up, Ashish and myself are going to take a break, and Mahesh and Sri are back with you for the next 15 minutes. धन्यवाद संजीव। और यहाँ पर मध्याह्न के समय जो 1-0 की बढ़त हासिल थी वो अभी तक बरकरार है। जहाँ तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, 26वें मिनट में सुरजीत हंसदा ने जो गोल किया था वो एकमात्र गोल अभी तक इस मैच का लगा हुआ है। तब से लेकर दोनों ही टीमें संघर्षपूर्ण फुटबॉल खेलती हुई नजर आ रही, लेकिन गोल का कन्वर्जन का जहाँ तक सवाल है वो नज़र नहीं आया है। अच्छी तालमेल वहाँ पर खिलाड़ी के बीच देखने को मिल रही है। यहाँ पर लेकिन झुके हुए खिलाड़ी इस समय सर्विसेज के वहाँ पर जिस तरह से गिरे हुए हैं, वहाँ पर जिस रेफरी जो पहरेदारी कर रहे हैं यहाँ पर विलियम जॉय कोजी, उन्होंने गलत पाया इसे गिरते हुए नीचे और
ये संघर्ष यहाँ हुआ और दोनों खिलाड़ी लुढ़कते हुए नीचे गिरे, लेकिन और 8 नंबर के खिलाड़ी जो इस समय सर्विसेज के तारक हेम्ब्रॉम है, उनको पनिश करेंगे। यहाँ पर एक कोशिश हो सकती है गोल करने की, लेकिन वो व्यर्थ जाती रही। जहाँ तक सवाल है यहाँ पर बाईं छोर से आक्रमण जो किया था सर्विसेज के खिलाड़ियों ने, उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई और वहाँ पर ये बचाव किया बंगाल की टीम ने। निश्चित रूप से ये एक अच्छा बचाव कहा जा सकता है। और स्वागत है आपका इस समय मेरे साथी कमेंटेटर श्री कुमार। Thank you, Mahesh. A very close call there, with Chilton coming up with Lytton Shield coming up with 2 lovely tries. One settling into the grasp of the goalkeeper, Raja Burman, and this time Raja Burman rushing out of his charge to foil the attempt of the Services striker. Services playing a lot of quick football, hurrying their attacks, setting up a flurry of attacks, but they have not been able to control their lobs or through passes as they run away right into the Bengal defense or go wide and over the goal line or the sidelines, negating all their approach work. But nevertheless, it has forced Bengal into hurried clearances. Here comes a flag kick and cleared away by Akash Mukherjee, but a shot there by another one, and that's a goal line save there by the Bengal wing defender over there. That's Shrestha, who's dropped back to support his attack, and Narawari Shrestha coming up with a goal line clearance. So there you see it, that shot from the right over there, and there it is, that header from Narawari Shrestha, ensuring that the ball doesn't enter the net. So Bengal surviving a very, very close call again. Services all over the Bengal half box over here. And let's see how much they can do to get back on level terms. They're still trailed by a goal. Time ticking away for them. About less than half an hour left in this match over here. Bengal 1, Services 0. Bengal struggling hard to retain what they've got so far in the game. The goal that Surajit Hansda scored in the first half, but they've been under a lot of pressure from the Services team. Here is Naveen Gurung with that throw in from the far side, just near the corner flag on the right. The Bengal goalkeeper on the ground over there, as you see it, Raja Burman. The game held up for a brief while. The throw in yet to be taken there as Naveen Gurung waits for the referee's signal. But in the meantime, is the goalkeeper Raja Burman down on the ground over there, receiving some attention by his teammates and also the bench as the officials go to attend to him. He's all right now. He's up on his feet and all set for Naveen Gurung to take that throw in from just near the corner flag on the right. What will Services do? Here it comes into the box, headed wide over there, but an attempt by Lytton Shield for a back volley, not materializing, but cleared away by the tall stopper Bishwajit Hembrom at the expense of another throw in here. Services launching an attack, but cleared away by Bengal, but only as far as Deepak Singh with the ball over there, losing out on the far side. Bengal on the counter from the right flank. What will they do with this? Here goes another move from the right over there, pushed down on the right flank, deeper just outside the box. In comes the lob over here, and that lovely chance over there. What an opportunity for the number 11 for Bengal, Deepak Kumar Rajak, as the floater came in from the right. He was unmarked over there, and he only managed to tap the ball wide of the goalpost, frittering away a wonderful opportunity. There you see the replay of that frittered opportunity by the Bengal forward over here, Deepak Kumar Rajak, the number 11 on your screen, only managing to tap that ball wide of the goalpost without being attended to by any of the Services defenders near him. Services on the attack this time, the ball hitting the on-rushing Deepak Singh and going over the line for a throw into Bengal from just opposite the commentary position over here on the Bengal left flank. Services doing everything they possibly could to exert pressure on the Bengal defense and get the equalizer, but not yet successful so far. Lytton Shield with that ball over there, the number 7 on his screen. Still Lytton, and still, but cut away nicely with a firm tackle by Biswajit Hembrom. Losing possession there of Lytton Shield, tried to go it alone, paid the penalty for it. And here is another move, Tarak Hembrom giving it to
Tutan Das on the far side of the field, trying to work it around deeper into the flank for Deepak Kumar Rajak, but Rajak losing out. A throw into the services team, and a foul here there by Akash Mukherjee on the number 2 for the services team. That's Ronaldo Singh, and a free kick just outside the penalty box on the right flank to the services team. It's going to be from the left over there. There you see Christopher Kemai, the number 8, always in the thick of action here for services with the floater. 1, 2, 3, 4, 5 red shirts inside the 18-yard box. What will Christopher Kemai do? Here goes the whistle. In comes the floater on the far side, but cleared away by the Bengal defense. Robbie Ansda with the ball, comes up with a final clearance. The ball hitting the services captain Suresh Mithai and going over the line. The danger averted. Bengal surviving again. Services certainly all over the Bengal box, and these Bengal defenders having a trying time over here in warding off those attacks repeatedly by the services men from both the flanks, no doubt. And here is another player lying injured from the Bengal team. Looks as though it is Akash Mukherjee. Now Bishwajit Hemram there calling for medical attention, and the game held up for a brief while as the number 18 on the far side of the screen, Amit Chakravarti, waits for the signal to restart the game. Yes, that is Bishwajit Hemram, the number 3 on the field. The referee asking him to go outside the goal line and then come back into the game to take his permission and return onto the field. There he is, the number 3, leaving the field on the far side of his screen, just near the corner flag. There goes the whistle for the throw-in. Amit Chakravarti with that throw-in. Throws it deeper down the flank, but headed there by Suresh Mithai. The ball comes towards the left over there. Litton Shield, but Litton Shield dispossessed once again there by the Bengal defense. Not able to get to the box over there. The clearance goes over the line. Suresh Mithai with that throw-in comes up with a long effort on the far side. Services still maintaining the pressure on the Bengal defense. Most of the exchanges inside the Bengal territory. A stray red, and here again another foul there by, it's going to be a booking, I think. Yes, the number 12 in the Bengal team, Basudev Mandi, getting the yellow card once again. So 3 Bengal players in the referee's notebook over here. Amit Chakravarti, Tarak Hemram, and now Basudev Mandi. The game getting a little physical, no doubt over here. Yes, Mahesh. 3 खिलाड़ियों को यहाँ पर येलो कार्ड दिखा दिया गया है और वेस्ट बंगाल की टीम को अब सचेत होकर, थोड़े चौकन्ने होकर ये इस फुटबॉल को खेलना होगा, क्योंकि इसके बाद अगर टीम को आगे जाकर खेलने का मौका मिलेगा, एक हाथ और गलती अगर उनसे हो जाती है तो रेड कार्ड के जरिए टीम खिलाड़ी वंचित हो जाएगा अगला मैच खेलने से, जो कि फाइनल का मुकाबला होगा। अपने आप को संभालना होगा, संतुलित रखना होगा मन मस्तिष्क, और इस बार बिल्कुल बाहर की तरफ हवा में तैरती हुई गेंद निकली, नियंत्रित नहीं कर पाए, लेकिन 3 खिलाड़ी तारक हेम्ब्रम, वासुदेव मंडी और अमित चक्रवर्ती को यहाँ पर येलो कार्ड दिखाया गया है इस मुकाबले में। और वासुदेव मंडी ये जो खिलाड़ी 12 नंबर की जर्सी पहने हुए, यहाँ निश्चित रूप से वेस्ट बंगाल की टीम अपने तरफ से प्रयत्न जरूर कर रही है। 1-0 की बढ़त उनके पास हासिल है 26वें मिनट में लगा हुआ गोल। इसके बाद में सर्विसेज टीम ने अपने तरफ से कोशिश जरूर की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इस समय पास करते हुए वासुदेव मंडी ने दाहिने तरफ दिया, गेंद आकाश मुखर्जी ने आगे की तरफ सरकाते हुए अपने खिलाड़ी को दिया है। वहां पर आए रवि हंसदा, उनका तिरछा पास हवा में तैरता हुआ, लेकिन गोल पोस्ट के काफी बाहर। वहां पर दीपक कुमार रजक थे, वो उनके सर के ऊपर से गेंद निकलती हुई नजर आई और बचा हुआ काम सर्विसेज के ये गोलकीपर इस समय भविंद्र मल्ला ठाकुरी। और निश्चित रूप से जो प्रयत्न किए गए हैं उसमें उतनी सुनिश्चितता नहीं थी, जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है कि गोल हो सके। एक गोल जो बहुत ही अच्छी तरह से लिया गया था, उसके अलावा दूसरा गोल देखने को नहीं मिला है, जबकि खेल इस समय 71वें मिनट में प्रवेश कर रहा है दुधिया रोशनी में। ये एका एरिना ट्रांस स्टेडिया का मैदान पूरी तरह से इस मुकाबले को देखने के लिए थोड़े बहुत दर्शक ही आज यहाँ पर मौजूद हैं। हवा में तैरती हुई, लहराती हुई हेडर के जरिए रोका और आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश, फिर वहां पर नियंत्रित किया। अब पक्ष में इस समय सर्विसेज के और 11 नंबर के जर्सी ने वापस लिया, पोजीशन लिया। दीपक कुमार ने पास किया 19 नंबर को, तोतन दास
गोल पोस्ट के बिल्कुल बाहर और वहां पर तिरछा पास देते हुए वासुदेव मंडी आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। दो खिलाड़ियों के बीच में संघर्ष, हाथ से शायद वहां पर किसी तरह का धक्का लगा हो और हम रेफरी की तरफ देख रहे हैं, लेकिन रेफरी ने कहा कंटिन्यू प्ले एंड खेल इस समय चलता हुआ दाहिने छोर से वहां पर तेजी के साथ अच्छा पास तिरछा और बैक पास देने के बाद यहाँ पर पोजीशन अभी भी अब जाकर आया है यहाँ पर सर्विसेज के पास। बाएं छोर से आक्रमण में लगे हुए सर्विसेज के खिलाड़ी इस समय अपनी तरफ से कोशिश करते हुए, लेकिन जो कोशिश हो रही है वो इतनी पर्याप्त नहीं है कि यहाँ पर सर्विसेज की टीम एक एक गोल की बराबरी कर ले। तिरछा पास यहाँ पर अमलदास, नवीन गुरुंग, अच्छा पास उनका डायगोनल सीधा लिटन सिल के पास आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर पास दिया बाईं तरफ से, खतरनाक खिलाड़ी क्रिस्टोफर ने आगे किक लगाई लेकिन उसका बचाव करते हुए फिर गेंद आई है। यहाँ पर लंबा कोशिश और गोल। बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन, समन्वय देखने को मिला और लिटन दास जो कि वहाँ पर थे बहुत तेजी के साथ जो उनको गेंद हवा में तैरती हुई आई काफी दूर से और ये प्रयत्न Offside flagged over there. There you see it. The two players signal for offside. Deepak Singh and Liton Shield. Liton Shield managed to buzz the net, but the flag went up on the far side, and Bengal survived once again. There it is, Liton Shield. ऑफ साइड करार दे दिया गया था, इसलिए जो कोशिश की गई वहां पर वो व्यर्थ जाती रही। हालांकि अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिला था, लेकिन ऑफ साइड डिक्लेयर हो जाने की वजह से दो खिलाड़ी बिल्कुल गेंद के सामने थे और बिना छुए जब आप इस तरह से गोल लेने की कोशिश करते हैं तो ऑफ साइड डिक्लेयर हो जाते हैं। इस बार फिर लिटन दास अपने तरफ से कोशिश करते हुए पोजीशन लेने के लिए, लेकिन अच्छा तालमेल, अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिला था वहां पर। श्री Bengal surviving miraculously over there. Liton Shield intercepting that lob and putting it into the net, but the flag was up for offside. Deepak Singh also going for that ball, and possibly it was Deepak Singh who was offside, and that effort from Liton Shield negated, and Bengal surviving miraculously over here. West Bengal 1, Services 0. Services all over the Bengal box almost the entire second half over here. Time ticking away for Services as we come to the last quarter of this match. Lob once again into the box. Liton Shield with the header there. The ball comes to Deepak Singh inside the box over there, but Deepak Singh comes up with the right footer and just bangs it over the crossbar. What a chance! Another splendid effort there. Liton Singh putting Deepak Singh on the far side, and Deepak Singh blazing his right footer over the bar. There it is, the replay of that effort for you. From very close quarters, just outside the 6-yard box, and the Bengal goal surviving one more time. लगातार दो बार वहां पर बंगाल को भाग्य का साथ मिला है और पहले बार लिटल सिल से गलती जो ऑफ साइड होने की वजह से नहीं मिला, वो चांस गया। उसके बाद में दीपक सिंह ने 1-1 वहां पर थोड़ी सी जो जल्दबाजी हुई, हड़बड़ाहट हुई, उसके वजह से ये गोल जाता रहा। लगभग 75 मिनट में यहाँ पर एक बदलाव किया जा रहा है। 14 नंबर के खिलाड़ी अंदर जा रहे हैं और 2 नंबर 14 और 16 नंबर के खिलाड़ी इस समय बदलाव किए जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के लिए, और 2 नए खिलाड़ी 14 नंबर की सुब्रता और राकेश धारा मैदान पे जा रहे हैं। तो ये 2 मौके ये एक के बाद एक गंवाए। तो वहाँ पर ये जो हवा में तैरती हुई गेंद आई थी, किक मारा, लेकिन वो गेंद जो पहले चली गई थी ऑफ साइड हुए और उसकी वजह से वो मौका चला गया। तो 78 मिनट खेल चल रहा है। कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन, मेरे साथ आ रहे हैं यहाँ पर आशीष चरंगू मेरे जगह कमेंट्री करने के लिए। आइए, स्वागत है आपका आशीष। Yes, Ashish, Bengal survived miraculously over there. That goal flagged for offside, and then again Deepak Singh blazing his right footer over the crossbar. Services all over the Bengal penalty box for most of the second half, and Bengal under immense pressure over here from this absolutely fit Services team. They still have time to restore parity. They have been threatening the goal repeatedly, and let's see how much they can do to get back into the game. Yes, Ashish.
लगातार सर्विसेज की टीम इस समय दबाव में रखी हुई पश्चिम बंगाल की टीम को, जो कि एक गोल की बढ़त जरूर बनाए हुए है, लेकिन पिछले 5 मिनट के दौरान 2 अवसर मिले वहां पर सर्विसेज की टीम को गोल करने के। एक में वो ऑफसाइड रहे और एक में वहां पर गेंद को क्रॉस बार के ऊपर मार दिया था सेना के खिलाड़ी ने। इस समय दाईं तरफ से कोशिश, क्रॉस अंदर आता हुआ, लेकिन स्टॉपर की पोजीशन पर खड़े हुए खिलाड़ी ने आसानी के साथ गेंद को वहां पर क्लियर कर दिया। फर्स्ट टाइम क्लियरेंस, गेंद दूर वाले छोर पर पहुंची है सुनील के पास। सुनील का लेफ्ट फुटर पेनल्टी बॉक्स के ऊपर हेड द्वारा गेंद को क्लियर कर देंगे वहां पर निश्चित रूप से आसानी से। इस समय तारक हेम्ब्रम गेंद को एक लंबा शॉट लगाकर पहुंचाया था इस समय सर्विसेज के हाफ में, और यहां पर ये ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ दूसरे हाफ का। जैसा कि आप जानते हैं प्लेइंग कंडीशन के अनुसार दोनों ही हाफ में एक एक ड्रिंक्स ब्रेक लिया जा सकता है, और यकीनन कहना होगा कि पहले हाफ में बढ़त ज़रूर हासिल की पश्चिम बंगाल की टीम ने, लेकिन दूसरे हाफ में कहीं ना कहीं अभी तक अपने खेल से प्रभावित किया है सर्विसेज की टीम ने। Absolutely, Ashish, no doubt about that. Bengal under immense pressure almost right through the second half, and Bengal very lucky to survive those close calls from services, and especially Litton Shield has been a thorn in the flesh of the Bengal defense, and certainly he has come to scoring at least on 3 occasions, with the goalkeeper Raja Burman also foiling an attempt. There it is, that offside decision there, as you see Deepak Singh clearly offside. That attempted shot from Litton Shield not bringing anything as far as services are concerned. Disappointed as he was with that flag that went up over there. So okay sir. 79वें मिनट में इस समय खेल चल रहा है और पश्चिम बंगाल की टीम इस समय आक्रमण करने की कोशिश, वहां पर पेनल्टी बॉक्स के अंदर प्रवेश, रॉबी हंसुदा के पास मौका है, क्या मौका बन सकता है, और गेंद को वहां पर संभाला था इस अवसर पर परिवर्तित खिलाड़ी सुब्रता मुर्मू ने। एक राइट फुटर लगाया, लेकिन सीधा गोल रक्षक के सुरक्षित हाथों में भविंद्रा ठाकुरी के पास, और भविंद्रा ठाकुरी ने गेंद को निकाल दिया। इस समय स्टॉपर की पोजीशन पर खड़े खिलाड़ी के पास गेंद एक बार फिर से पहुंची है पेनल्टी बॉक्स के अंदर, लेकिन क्या वहां पर लिटन शील्ड गेंद को अपने कब्जे में कर पाएंगे, लेकिन गेंद इसी बीच उनकी रफ्तार से ज्यादा तेज निकलती हुई गोल रेखा को पार कर गई, और इस तरह से वेस्ट बंगाल की टीम के लिए इस समय ये गोल किक। मध्यांतर के बाद सर्विसेज की टीम बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, लगातार आक्रमण दर आक्रमण बना रही है पश्चिम बंगाल की टीम के ऊपर, और ये आज का चौथा पीला कार्ड वेस्ट बंगाल की टीम के खिलाफ। राजा बर्मन जो कि गोल रक्षक हैं, समय नष्ट करने के लिए यहां पर उन्हें ये पीला कार्ड दिखाया गया है। आज के मैच में जब वेस्ट बंगाल की टीम खेलने आई थी उससे पहले 7 खिलाड़ियों को पीला कार्ड दिखाया जा चुका था, जो 7 खिलाड़ियों के साथ वो पीले मैदान इस मैदान पर उतरे थे येलो कार्ड के साथ, और आज 4 और खिलाड़ियों को यहाँ पर पीला कार्ड दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं पीले कार्ड की जो संख्या है पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों की वो लगातार इस मुकाबले में बढ़ती जा रही है। 80वां मिनट इस समय प्रगति पर बाईं तरफ से आक्रमण करने की कोशिश एक बार फिर से सेना की टीम की तरफ से। पिंटू महाता वहां पर अपने साथी खिलाड़ी क्रिस्टोफर के लिए गेंद को निकाला दूर वाले छोर पर, जैसे ही देखा सामने 2 खिलाड़ी हैं, बैकपास के रूप में महाता के लिए एक बार फिर से गेंद को निकाल दिया। कप्तान सुरेश मतई के पास गेंद मध्य रेखा के नजदीक इस समय गेंद को संभाले वहां पर अमलदास, लेकिन अमलदास का क्या वहां पर दाएं फ्लैंक में पास दीपक सिंह के लिए जो पहुंचा है कुछ कामयाबी दिला पाएगा सेना की टीम को, लगता नहीं है। हालांकि एक बार फिर से वहां पर गेंद को अपने कब्जे में किया जरूर, पेनल्टी बॉक्स के अंदर चिप करना चाहते थे, लेकिन लंबे ऊंचे कद के हेम्ब्रम ने वहां पर गेंद को आसानी के साथ क्लियर कर दिया, और खतरा एक बार फिर से टालते हुए। तो बीच मैदान पर इस समय कश्मकश होती हुई दोनों ही खिलाड़ियों की टीमों के बीच गेंद को अपने कब्जे में करने के लिए इधर माइक्रोफोन पर मेरे साथी संजीव मुखर्जी। Thank you, Ashish. Things hotting up as we are towards the end of this game. Just about a little less than 10 minutes left on the clock, Ashish. And of course, services would feel hard done by the decision. But they can't help it. The reason being that, of course, West Bengal is still ahead. And of course, there's a change which is being brought in by services. Vivek Kumar, jersey number 9. Vivek is soon going to be brought in place of Deepak Kumar. So that's another change. Vivek coming in for Deepak.
81 minutes on the clock. Where does this game go from here on? Off he goes. High curler, trapped quickly, trying to play a 1-2, missing out. Ball control seems to be a problem with both the teams. They're tiring on very, very difficult conditions. That's a good ball. Very good intervention there from the services back line. Services trying to make amends for the goal they've conceded. Oh, that's a good ball. That's a good ball. Deepak on the right. No, before that he's dispossessed. Deepak still waiting on the edge of the box. Deepak as well as Vivek are waiting. And he centers. He goes for the header. Yet again a clash of heads. Ball cleared though. And from there it's yet again snatched by services. Tries to go hard. Tries to come in with a long ranger. But unsuccessful. That's unsatisfactory. He will not be happy with his own attempt. 82 minutes on. We can see Bengal coach Biswajit Bhattacharya in deep conversation with the assistant officials out there. Raja with the goal kick. Brought back inside his own half from the goal line. There they go. That's the referee's flag again. Ball control, possession is fine, attacks are fine, but Ashish, ball control, accuracy, shooting prowess. Three things they will have to improve very, very soon. Naveen Gurung, lovely back heel there. Pinto chips it forward. Tries to chest trap it. Misses out. Clearing the lines. Back to the services defense. What is services plan B according to you, Ashish? मुझे लगता है कि सर्विसेज की टीम के पास सिर्फ इस समय एक ही प्लान है कि वहां पर आक्रमण दर आक्रमण करके बराबरी का गोल हासिल किया जाए और उस कवायद में लगातार मध्यांतर के बाद जुटी हुई नजर आ रही है सेना की टीम यहां पर। हालांकि एक बार फिर से वहां गेंद पहुंची है सर्विसेज के गोलरक्षक भविंद्र ठाकुर के पास। दाईं तरफ गेंद को उन्होंने बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी नवीन गुरंग के लिए। नवीन गुरंग गेंद को देना चाहते थे दीपक के लिए, लेकिन प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी के पांव से लगती हुई गेंद बाहर चली गई। थ्रो इन इस समय सर्विसेज की टीम के लिए। दीपक सिंह गेंद को अपने कब्जे में किए हुए वहां पर बैक पास क्या नवीन गुरंग के लिए निकालेंगे। इस समय बॉडी डॉज देकर गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अंत तक गेंद को उन्होंने निकाल दिया इस समय सुनील के लिए। बल्कि वहां पर महतो हैं, महतो का वहां पर सेंटर पेनल्टी बॉक्स के अंदर हेड द्वारा गेंद को गोल में डालने की कोशिश लिटन शिल के द्वारा, लेकिन अपने प्रयास में कामयाब नहीं। गेंद सीधा गोल रक्षक के हाथों में पहुंचती हुई अभी भी वेस्ट बंगाल के पक्ष में एक और सर्विसेज ने खाता नहीं खोला है जहां तक गोल करने का सवाल है। इस मुकाबले में सर्विसेज की टीम मध्यांतर के बाद लगातार कोशिश कर रही है और ये देखिए महता का वहां पर किस तरह से क्रॉस पहुंचा था और हेड द्वारा वहां पर गेंद को गोल में डालने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों स्टॉपर पूरी तरह से उन्हें वहां पे मार किए हुए थे। बहुत ज्यादा अवसर नहीं था कि वो खुल करके उस हेडर को दिशा दे पाते। फिलहाल सेना की टीम फिर से आक्रमण बनाने का प्रयास करती हुई, लेकिन वहां पर फाउल हुआ इस अवसर पर आकाश मुखर्जी का लिटन शिल के खिलाफ। और यहाँ ये कार्ड दिखाते हुए 12 नंबर की जर्सी में संभवतः आज का चौथा कार्ड। 85वां मिनट इस समय चलता हुआ तैयार वहां पर। ये देखिए किस तरह से गेंद को वहां अपने प्रयास में करना चाहते थे सर्विस के खिलाड़ी, लेकिन आकाश मुखर्जी वहां पर थे जिनको ये पीला कार्ड दिया। फिर से वहां पर सुरेश मथाई के पास गेंद। सुरेश मथाई अपने साथी खिलाड़ियों का स्थान देखते हुए एक बार फिर से दूर वाले छोर पर इस समय गेंद को अपने कब्जे में किए हुए आक्रमण बनाने की कोशिश। इस समय बी सुनील के पास गेंद को निकाला अपने साथी क्रिस्टोफर के लिए। क्रिस्टोफर साथी खिलाड़ियों का स्थान देख रहे हैं। महता के पास गेंद, महता के सामने दो खिलाड़ी वहां पर मौजूद, तो गेंद को छीनने का प्रयास करते हुए अंततः उन्होंने फैसला किया कि थोड़ा पीछे की तरफ जाकर गैप हासिल करें। अपने प्रयास में थोड़ा सफल होते हुए गेंद इस समय अपने कब्जे में किए हुए वहां पर फिर से 17 नंबर की जर्सी में बी सुनील, लेकिन गेंद को छीनने में वहां कामयाब होते हुए खिलाड़ी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के सुरक्षा पंक्ति में। क्रिस्टोफर के पास गेंद पहुंची, मध्य रेखा को पार करने के साथ ही दीपक के पास गेंद। दीपक ने वहां पर 1-2-1 करते हुए गेंद को निकाल दिया नवीन गुरंग के लिए, लेकिन नवीन गुरंग
गेंद को लेकर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, उनके पांव से गेंद लगती हुई बाहर की तरफ चली गई और ये थ्रो इन इस समय वेस्ट बंगाल की टीम के लिए। 19 नंबर की जर्सी में वेस्ट बंगाल की टीम के खिलाड़ी तोतन दास इस समय थ्रो इन लेते हुए एक गोल की बढ़त इस समय वेस्ट बंगाल की टीम को हासिल है। That's right, less than 4 minutes left on the clock. Yet another injury there. Toton Das writhing in pain, that's what it seems like from this view. And services players were protesting, possibly not taking it seriously, but you never know. Toton, he's got his hands on his nose. We're going to check. It was a pretty rough challenge there, very rough challenge, of course very rough challenge there from Naveen Gurung. He has to be very, very careful. That could have called for a caution very, very easily and possibly could have brought in the 5th booking by the referee. Williams Joy Koshi hasn't so far. Bengal, how do they go about? Little over 2.5 minutes left. Long ball, feed meant for Vivek, but he went far ahead of him. And the ball has gone out of the touchline. Referee having a busy evening this session, but in particular, trying very hard to keep control over the game and the proceedings. This even as Bengal wants to go for the killer blow. Well, another substitution coming in there. And Konosai, jersey number 3. Jersey number 8, Peter Comic, is substituted by jersey number 3, Nathalan Thompson. Thompson is coming, jersey number 3. But is it a little too late for services? One has to wonder. Long ball. Litton, nowhere close. The delivery of the ball, not very good. Players running helter-skelter. Nobody really has a grip on the proceedings, other than the fact that Bengal is leading by a goal to nil. There you go, losing ball control, ball possession very, very easily. Quick feed down the left flank. A sliding intervention there by Akash Mukherjee, making sure that the lone attacker wouldn't get drift off the ball. Another throw in there. Deepak. The clock's ticking by. What happens? Who takes the cake? Who will get into the final of the 36th National Games men's football competition? Who will it be that will face Kerala in the finals? Yet another injury, it seems. Or is it just the hamstring? We'll have to take a look. The referees are out there closely watching the proceedings. Yet again, medical personnel bounding in. And as the moments tick by, the clock ticks by. The game is on hold briefly, but services know they have very little time to come back into this game. Will they do so? Less than 90 seconds left on the clock. Possibly a minute or two here and there as added time. Services did play their heart out, but overall the superior game sense and experience of Bengal, making sure they still have the lead. That's 89-30. So the clock says just 30 seconds. You can surely add a minute and a half, or possibly 2 as added time. Long goal kick near the center line, headed back by Ronaldo. Nowhere close to his best today. And the Bengal defense anticipating the breach, the possible breach coming forward. That's a good snatch from the left. Oh, lovely, lovely, lovely footwork. How far does he go? How far does he go? Well, at least 2 of them are there close by. Number 8 passes on. Will he pass on alone? And the ball gets mixed up even as he tried to take it all alone. And there you go. He's given the ball away, and of course the referee will blow for a foul there. The referee will blow for a foul there. And I believe we'll be headed for a very, very long added time. You can see on the top left of your screens, 13 minutes. Ashish, when was the last time we actually saw a football match having 13 minutes of added time? मुझे याद नहीं पड़ता कि कब इतना ज़्यादा इंजरी टाइम किसी फुटबॉल मैच में मैंने देखा हो। हालांकि जिस तरह से वहां पर जब सुरजीत हंसदा बीच मैदान पर चोटिल होने के बाद गिरे थे, उसके बाद काफ़ी लंबा समय लगा था कि उनके फिजियो वहां पर उनको ट्रीट कर रहे थे। उसके बाद स्ट्रेचर पे डाल करके उन्हें बाहर ले जाया गया, जहां से वो एम्बुलेंस में अंततः यहाँ से बाहर निकले मैदान से। तो वहाँ पर समय काफ़ी व्यर्थ हुआ था और मुझे लगता है यहाँ पर जो 13 मिनट है वो यकीनन सर्विसेज की टीम के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि यहाँ पे वो बराबरी हासिल कर सके। Absolutely, and the way this game has gone on, of course, one has to
say it without any doubt. A very closely fought encounter. Although services have not been able to score in regular time. But this last 13 minutes, is there a silver lining in here for services? The reason the Bengal are without Surajit, of course, that was a forced substitution. And they had to bring in Dipesh. That sort of affected the gameplay till now. Off we go. Another start with a quick throw in. Trying to take the ball forward. But of course, it's a good volley. Trying to feed it back. Volleyed away. A little erratic. It's not very, you cannot really say that's absolutely brilliant football from either team. But effective it has been for Bengal so far. Naveen Gurung quickly squaring on the right. Oh, lovely one too. Quick turn. What does he do? Couple of step overs, maybe a little bit too much. Loses the ball. And off they go. Bengal with a long feed. Sunil B, as always, standing there, waiting. But of course, the lone striker not being able to do much. And that is Subrata. Quickly passing on. Suresh Mitei serves as skipper. Mitei. Crossfield. But again, faulty delivery. Coming back in, both players going for the header. Missing, both of them missing. Lots of errors being committed by both teams. Few forced, lots of unforced errors too. Remains to be seen which way this game is headed. And of course I'm joined by Mr. Tiwari, who's still keeping his cards close to his chest. Is yet to tell me which is the team he thinks should be ahead at this point of time. We'll look at the attack from Bengal before I come to him. And the Bengal strikers Tarak and Robi actually haven't been that effective, although Bengal has scored first and the only goal so far. Never really been in the goal scoring positions as one would have loved them to be in. Amit Chakravarti quick throw in. Yet again another error. Miss pass. Off they go. Services. Do they have enough legs? Do they have enough gas on the tank? Long drive down the outside left channel. Too long. बहुत लंबा समय यहाँ पर इंजरी टाइम का ऐड कर दिया गया था 13 मिनट का और 1-0 की बढ़त अभी तक जो वेस्ट बंगाल के पास मौजूद थी वो बरकरार है यहाँ पर और अभी फिर एक खिलाड़ी वहाँ पर गिरता हुआ नजर आया क्या एड ऑन टाइम में और एक एड ऑन टाइम मिलेगा बहुत ज़्यादा इंजरी देखने को मिली कई बार खिलाड़ी जमीन पर गिरते हुए नजर आए हैं पहला गोल वहाँ पर जो दागा गया वहाँ एकमात्र सुरजीत हंसदा द्वारा 26वें मिनट में 1-0 की बढ़त वहाँ पर हासिल की थी दूसरे एंगल से देखिए बाएं पैर से अंदर की तरफ धकेलते हुए उस गेंद को गोल में तब्दील किया था और उसके बाद भरसक प्रयत्न किए गए दोनों तरफ से दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने वेस्ट बंगाल के और सर्विसेज के लेकिन कोई भी गोल उसके बाद नहीं लग पाया और दूसरे हाफ में भी एक सुरक्षित वहाँ पर फुटबॉल खेल का प्रदर्शन करते हुए वेस्ट बंगाल की टीम ने बांधे रखा वहाँ पर सर्विसेज को जो भी प्रयत्न वहाँ पर किए गए जो भी मंसूबे इच्छाएं वहाँ पर व्यक्त हुई जो प्रयत्न किए गए एक सूत्रता के साथ सर्विसेज की टीम ने उससे वंचित किया वहाँ पर वेस्ट बंगाल के टीम ने सर्विसेज को और निश्चित रूप से ये जो एक मौका था वहां पर ऑफसाइड डिक्लेयर होने की वजह से ये गोल नहीं दिया गया और ये एकमात्र मौका जो गया हाथ से मैं समझता हूं कि इसी की वजह से पूरा मैच का जो काया पलट है या पलड़ा ये वेस्ट बंगाल के पक्ष में जाता रहा और कुल मिलाकर 1 के मुकाबले 0 गोल से यहां पर वेस्ट बंगाल की टीम ने ये मुकाबला जीत लिया है अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका फाइनल मुकाबला होगा केरल के खिलाफ वेस्ट बंगाल 1 सर्विसेज 0 1-0 से मुकाबला वेस्ट बंगाल की टीम ने जीत लिया है All the crew team, thanks.